So, hi guys, welcome to day 4 of FR batch. Today we'll be completing our pending topic of IFRS 15 special consideration. The new topic we'll pick today is IS 23, which is borrowing cost, and one more small topic, IS 36, impairment of assets. So, this is the agenda of today. So, let's start. The first special consideration title is Bill and Hold Sale. Bill and Hold Sale. Can you guys understand with the term what is bill and hold sale? Bill and hold sale. Anything you want to add on? Bill and Um, hold sale. like maybe we can say that it's a credit transaction, like till the amount of the goods that we purchase is not paid, we are Mm-hmm. holding the bill. Okay, okay. No, this is not the case here, but you guessed correctly with the terminology. I would have guessed the same. Uh, the term bill and hold sale means that when we purchase, let's take with an example. When we purchase a new car, Hmm. हम क्या कहते हैं? We say uh, we want delivery on a special occasion. For example, Raksha Bandhan is coming next week, and we booked a car today. Right. From the point of view of a car company, it the car has already been built and purchased 1 week before the Raksha Bandhan, but the Yes. customer is requesting, to deliver it on Raksha Bandhan. Okay. So it the revenue the the bill got billed na on the week before the purchase. Hmm. एक वीक बाद सेल होगा, एक वीक बाद डिलीवर होगा. व्हाट डज इट मीन? बिल एक वीक पहले हो गया, होल्ड किया फॉर 1 वीक एज ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, एंड फिर सेल कर दिया. सेल सेल तो एक वीक पहले ही हो गया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर रिक्वेस्ट वी होल्डेड दैट कार फॉर 1 more week. Right. करेक्ट? ठीक है. Let's go with the theory. Reason for the arrangement must be substantial. Is that customer has requested the arrangement. Anything. केक का एग्जांपल ले लो. एक वीक पहले ऑर्डर देके रखा हुआ है, और जो केक किस टाइप का केक चाहिए सब कुछ परचेज है, बिल्ड है, हो चुका है, पेमेंट सब कुछ कंप्लीट है, सब Hmm. कुछ डन है. But the Hmm. customer is saying, I want this cake on after 1 month on my son's birthday. Correct? Okay. Hmm. Product must be identified separately as a belonging to customer. प्रोडक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाई. हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कार अलग से रखी हुई है कस्टमर के नेम पे, इट बिलोंग टू दैट कस्टमर, अलग रखी हुई है, होल्ड करी हुई है. करेक्ट, वी कैन आइडेंटिफाई. Right. प्रोडक्ट करंटली मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर. रेडी है मतलब सिर्फ होल्ड किया हुआ है, अलग जगह रखा हुआ है, आइडेंटिफाइड एसेट है, और अगर कस्टमर चाहे तो आज आज भी ले जा सकता है. इट्स रेडी. इट्स रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर. Right. करेक्ट. The entity has the ability. Entity, who is the entity? The car company. The car company, the entity cannot have a ability to use the product. अब already bill हो गया है. It's the asset belongs to customer. सिर्फ premises पे hold किया हुआ है. Why? Because the customer has requested to do so. That's it. Hmm. Correct. The entity cannot have a ability to use the product or to direct to another customer. Correct. वो यूज नहीं Right. कर सकती उस प्रोडक्ट को, और ना ही किसी को डायरेक्ट कर सकती है, इंसान किसी को किसी और को सेल कर सकती है वो सेम का. करेक्ट. तो दिस इज Okay. जस्ट बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट. देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दैट. रेवेन्यू वैसे ही रिकॉर्ड होगा कस्टमर के हिसाब से. कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हमने उसको होल्ड किया, वरना बिल उसी दिन हो गया था. बिल उसी दिन हो गया, इसका मतलब
अब वो असेट सेम डे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सेम आइडेंटिफाइड असेट है, वो एक वीक बिफोर ही वो असेट कस्टमर, इट्स बिलोंग टू दैट कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए सेम डे, जिस दिन बिल हुआ, पेमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। सिर्फ कस्टमर के रिक्वेस्ट के कारण हमने उसको होल्ड किया हुआ था अपने प्रीमाइसेस पे। राइट। करेक्ट। क्यों तो अब रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसे समझ कैसे आ रहा है कि ट्रांसफर हो गया? एक तो प्रोडक्ट किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते, किसी को और को बेच नहीं सकते, इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली ये मतलब हुआ ना कि असेट इज सेल्ड, हम्म कार इज ऑलरेडी बीन सेल्ड, अलग जगह रखा हुआ है, आइडेंटिफाइड एसेट है, बिलोंग टू दैट कस्टमर। आज चाहे तो आज ले जा सकता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अपॉन कस्टमर कि कब उसको हम्म लेके जाना है। हम्म करेक्ट। या हम्म दैट्स इट द मीनिंग ऑफ बिल्ड एंड होल्ड। कुछ और So कुछ? I have a question. हम्म If till the time the entity is holding that product of the customer, हम्म if anything happens to that, suppose a car or a cake, so who is हम्म responsible? Customer or entity? इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर ना। रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी टाइम पे ट्रांसफर होते हैं। Right. करेक्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी टाइम पे ट्रांसफर हो गए। कस्टमर की रिक्वेस्ट है, कस्टमर का रिस्क हो गया सब कुछ अब। Okay. बट जो आप जो कह रहे हो, इट्स वेरी रेयर कि होगा, बट स्टिल इट कैन हैपन, एंड it's the risk and reward has been transferred, so it's customer risk Right. अगर कुछ होता है तो। Okay, got it. Now the consignment arrangement. I think you have studied this topic in your 12th, consignment, if I'm not wrong. Consignment arrangement, anything? Consignment is like, uh, if I am a seller, Mm-hmm. I hire some agent Correct, correct, correct. to sell my goods Mm-hmm. in the country or outside the country. Perfect, perfect. So an entity is coming with some person, Hmm. hiring some of the person, giving control, not control, assets of his own, inventory of his own, and saying him that, go into the market and sell it Hmm. on behalf of me. Hmm. Correct. This relationship is called principal and agent. Hmm. Right. The person who is selling on behalf of an individual Is the agent. is the agent. Correct. And the Hmm. other one is called Principal. principal. So the question comes, how should we record revenue? Correct. Yes. For both. Let's take an example. Clothes worth $1,000 been given to agent to sell into market Hmm. at a price of $1,500. Okay. Sure. From the principal perspective कि मेरा कॉस्ट इज 1000, मैंने एजेंट को बोला इसको 1500 में बेच मार्केट में 1500। करेक्ट। Right. Right. सो
if the goods are sold, the principal will pay agent 10% commission of the profit. Okay, Yes. so for agent, एजेंट मार्केट में गया, 1500 के गुड्स बेचे, उसी टाइम पे उसको कैश मिल गया, तो Hmm. एजेंट के लिए क्या एंट्री बनेगी? कैश मिला 1500 का, करेक्ट? Yes. रेवेन्यू कितना होगा क्रेडिट? 1500. हाउ मच बाई 1500? नहीं, सॉरी, 10% of 500 1500. का 10% ना, प्रॉफिट का 10% बोला हुआ है, तो उसका रेवेन्यू तो 15 ही हुआ, Yes. और बाकी की लायबिलिटी है उसके लिए, क्यों? क्योंकि वो चीज उसको प्रिंसिपल को पे करनी है, बाकी का अमाउंट। Hmm. तो ये जर्नल एंट्री हो गई, करेक्ट, उसके लिए, करेक्ट। कैश उसको Hmm. 1500 मिल गया, 1500 फ्रॉम अ कस्टमर, तो पूरा का पूरा 1500 इज नॉट हिज रेवेन्यू, एजेंट में उसको, उसका रेवेन्यू क्या है? 500 का 10%, मतलब कमीशन। Hmm. तो 50 इज द रेवेन्यू ऑफ एजेंट, कमीशन पार्ट इज द ओनली रेवेन्यू ऑफ एजेंट, Right. बाकी का पार्ट इज द रेवेन्यू ऑफ कस्टमर, द प्रिंसिपल, करेक्ट। Right. तो उसको कैश मिलेगा प्रिंसिपल को, और ये कैश उसका खुद का नहीं है, आई मीन टू से एजेंट का। Hmm. एजेंट विल गिव कैश 1500 टू हिम, तो उसके लिए कैश वापस आ गया एजेंट के थ्रू से, मतलब एंट्री तो वही बनेगी ना। हाँ. कस्टमर ने एजेंट को दिया, एजेंट ने अपनी बुक्स में दिखा दिया इतना इतना है, Hmm. ठीक है। नाउ एजेंट इज गिविंग कैश टू प्रिंसिपल, Principal. 1500, ठीक है, 1500 का कैश दिया, Hmm. सेम एक्सपेंस भी वो रिकॉर्ड करेगा, कैश 1450 देगा वो, अपना कमीशन काट के ना, सॉरी, नॉट 1500, हाँ. करेक्ट ना, कमीशन ने खुद का रख लिया, Hmm. कैश देगा 1450 का, Right. उसमें से एक खुद प्रिंसिपल के लिए एक्सपेंस क्या है? कमीशन एक्सपेंस, कमीशन Hmm. एक्सपेंस है ना, उसने उसको हायर किया, Yes. Yes. 50 का डेबिट, और रेवेन्यू पूरा 1500. 15। तो इसका मतलब सेंस क्या बना? टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ 1500 फॉर प्रिंसिपल, ही हैज पेड 50 कमीशन टू हिज एजेंट एंड रिसीव कैश ऑफ 1450, करेक्ट। Hmm. तो जैसे ही इसने 1450 दिया, प्रिंसिपल की जो लायबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी? पे कर दिया ना उसने, हाँ. तो डेबिट लायबिलिटी 1450, क्रेडिट क्या होगा? Cash. कितना कैश चला गया? या दिस इज द एंटायर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। कस्टमर से पैसा आया, मैंने अपना Yes. कमीशन काट के मैंने पूरा पैसा पेमेंट को एजेंट को दे दिया, Hmm. एजेंट ने अपना, एजेंट के बुक में अपने 1500 का रेवेन्यू दिखा दिया उसने, 50 का एक्सपेंस दिखाएगा पीएनएल में, कमीशन एक्सपेंस, क्योंकि जो एजेंट को पे किया हुआ, Hmm. और कैश 1450 जो रिसीव हुआ, सेम अगर वो पे कर दिया तो लायबिलिटी जो उसकी 1450 दिख रही थी पहले क्रेडिट हो रही थी, अब डेबिट हो गई, क्यों? क्योंकि पे कर दिया, खत्म। और कैश पे Right. कर रहा है, कैश हाथ में से जा रहा है, तो क्रेडिट हो गया कैश, Right. करेक्ट, Understood. Und ठीक है। Yes. नाउ रीपरचेज अग्रीमेंट। ये सब small small topics ही है. हम्म, दिस आर द स्पेशल कंसिडरेशन, मैं स्पेशल Yes. कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे यूजुअल नहीं है ना, डील एंड होल्ड स्पेशल हो गया बिकॉज कस्टमर हिमसेल्फ इज सेइंग कि होल्ड करो उसको, इट्स एन स्पेशल थिंग, स्पेशल कंसिडरेशन। रीपरचेज Hmm. अग्रीमेंट्स, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, तो वो इसलिए उस कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ रेवेन्यू, इसमें हम वही पढ़ रहे हैं रेवेन्यू किसका कैसे रिकॉर्ड करना है, बट इट कम्स अंडर स्पेशल कंसिडरेशन टॉपिक, नथिंग एल्स।
Repurchase agreement. A repurchase agreement, repurchase something we are selling and again saying we'll repurchase that. Right. Correct? A repurchase agreement is where an entity sells an asset. I'll sell, for example, sold something to you in premises to repurchase the asset. उसी time पे we entered into a contract, we entered into an agreement that I'll gonna repurchase this asset at so and so date or after so and so years at a so and so price, etc. etc. Correct? Hmm. This is not a sale क्योंकि उसी टाइम पे रीपर्चेस अग्रीमेंट हो गया. सेल का मतलब क्या होता है? इस जब हमने बेचा इट एट द टाइम इट वाज नॉट प्री डिटरमाइंड और प्री डिसाइडेड कि in the entire life of the asset whether I'm going to purchase repurchase it or not. Correct? Right. उसी अगर एट द टाइम ऑफ सेल ही हम रीपर्चेस अग्रीमेंट में आ रहे हैं इसका मतलब इट्स नॉट अ सेल क्योंकि मुझे पता है 4 साल बाद 5 साल बाद मैं इस चीज को इतने प्राइस पे खरीदूंगा तो इट्स नॉट अ हाँ. यूजुअल सेल. तो अगर यूजुअल सेल होता तो हम क्या करते हैं 10 रुपए की चीज 12 में बेची 2 रुपए का प्रॉफिट हम दिखा देते बुक्स में. करेक्ट? इस तरीके से करते हैं. पर अगर Hmm. सेल है ही नहीं तो उसका कैसे अकाउंटिंग करेंगे उसकी उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे. दैट्स व्हाट वी गोना लर्न हियर. Okay. ओके. व्हाट इज दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेल. वेयर इज द पेंसिल. Asset or premises that is not recognized as sale, but either leased or secured loan against the asset. I'll explain you. These are generally three forms of repurchase agreement. First is obligation to repurchase. रीप सेल के टाइम पे कह रहा हूँ कि मैं 5 साल बाद 100% इसको खरीदूंगा तो इसका मतलब मेरा ऑब्लिगेशन आ गया. आई एम अ सेलर currently and Hmm. I'm saying after 5 years I'm gonna repurchase it. So it's an obligation for me ना. Right. राइट टू रिपर्चेज 5 साल बाद सोचूंगा मर्जी होगी तो राइट टू रिपर्चेज. आई हैव राइट टू रिपर्चेज बट हाँ सब्सटैंशियल नहीं है प्रोबेबल नहीं है फिक्स नहीं है ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं 100% को खरीदूंगा बट हाँ आई डू हैव राइट टू रिपर्चेज इट. ठीक है. Okay. Okay. ऑब्लिगेशन टू रिपर्चेज एट अ कस्टमर रिक्वेस्ट. अगर 5 साल बाद कस्टमर इज सेइंग यू हैव टू रिपर्चेज आई हैव टू रिपर्चेज. आई डू नॉट हैव ऑप्शन. इफ अ कस्टमर इज सेइंग यू नो आई डोंट वांट टू सेल टू यू अगेन so it's not my obligation. So everything is depend upon customer after 5 or 10 years to उसकी क्या मर्जी है what he is Right. trying to sell. Correct? Hmm. Obligation to repurchase at a customer request on customer request. Correct? If an entity has obligation or right to repurchase the asset the customer does not obtain the control. Correct? क्या मतलब हुआ? If a same day I'm selling to you and I'm saying that I'm going to repurchase it after 5 years इसका मतलब it's not a sale because अगर सेल होता तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके होते हैं. Hmm. बट इट्स नॉट. आई एम सेइंग आई एम गोना रीपरचेज इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा ही है अभी तक क्योंकि मैं कह रहा हूँ आफ्टर 5 years मैं परचेज करूंगा इसको आप कहीं ना कहीं. करेक्ट. तो 100% रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ सेल है ही नहीं. तो हम उस चीज Hmm. को कैसे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट आई विल repurchase it after 5 years at $8,000 on the date of sale. The sorry, on the date of sale, the price was $10,000. Hmm. Right, when this appeared, control Z is also not working. Okay.
sold at 10,000, repurchase at, I'm saying I'll repurchase it at 8,000. इसका Right. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने उसको लीज पे दिया उस चीज को। कैसे लीज पे दिया? रेंट पे दिया। आई एम सेइंग ऑन डे वन कि आई एम सेलिंग यू एट 10,000, आफ्टर Hmm. 5 years आई विल रीपरचेज एट 800। इसका मतलब 200 का कहीं ना कहीं मैं अपना लॉस ले लिया ना, कि मैंने उसको रेंट पे दे दिया, कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आ गया बीच में, रेंट पे दे दिया। Right. थोड़ा उस टाइप का लॉजिक बन रहा है ना? Hmm. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीज and will come under IFRS 16. Leases accounted as per. Correct? Same example. I'm saying I've sold it for 10,000 to you, but Hmm. after 5 years, I'll repurchase it at 20,000. Correct? Appreciation हो गया. क्या कह रहे हो? Appreciation हो गया. अप्रिसिएशन नहीं हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को सेल कर दिया मैंने 8,000 पे, और खरीदा 12,000 पे। इसका मतलब 2,000 का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि इट्स अ लोन अरेंजमेंट ना। तब मेरे को पैसे की जरूरत थी, मतलब इंस्टेंटली। ऑब्वियसली कौन बोलेगा कि मैं उसी टाइम पे सेम डे कम पे बेचूंगा और ज्यादा पे खरीदूंगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा 2,000 का। इट्स फाइनेंस अरेंजमेंट। Yes. करेक्ट। मेरे को पैसे की जरूरत थी, आई टुक 10,000, और उसके बाद Hmm. मैंने जब रीपरचेस किया, आई रीपेड 12,000। करेक्ट ना? यही अरेंजमेंट हो रहा है। Hmm. बेचा खरीदा सेम असेट, तो असेट तो गया वापिस आ गया, तो नील हो गया नेट इम्पैक्ट प्लस माइनस। बट Hmm. पैसा आया 10,000, गया 12,000। Hmm. करेक्ट। Right. So this type of arrangement is called finance arrangement and will come IFRS 9, financial instrument. Correct. Right. बाकी की इसकी कॉम्प्लिकेशन विल सी इन दिस रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड, IFRS 16 में और IFRS 9 में। Okay. ठीक है। अभी तक इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है इसमें। आई डोंट नो इसमें ये टॉपिक क्यों दिया हुआ है IFRS 15 में, एक्चुअली ये टॉपिक IFRS 16 का है। अगर हमने कम पे खरीदा तो, अगर Hmm. ज्यादा पे खरीदा तो इट्स काइंड ऑफ फाइनेंस अरेंजमेंट। मेरे को पैसे की जरूरत थी, आई टुक अ फाइनेंस इन द काइंड ऑफ, आई टुक अ फाइनेंस, आई टुक अ लोन, आई एम Right. रीपेइंग 12,000। तो इट्स अ फाइनेंस अरेंजमेंट। तो इसका खुद का एक स्टैंडर्ड है IFRS 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट का पूरा ए टू जेड डिटेल डिस्कशन होगा। Right. विल लर्न दिस कॉम्प्लिकेशन इन दो स्टैंडर्ड, बट करंटली सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अंडरस्टूड ना कॉन्सेप्ट? Yes. Yes. लेट्स गो विद द थियरी, लेट्स रीड इट। If an entity has obligation to repurchase the asset, the customer does not obtain the control. Correct. This Hmm. is because the customer is not liable to obtain substantially all of the remaining benefit of the asset. असेट की यूजफुल लाइफ है 10 years, 5 साल बाद बोल रहा हूं मैं वापस ले लूंगा। इसका मतलब कस्टमर के पास राइट ही नहीं है कि पूरे 10 साल उसको यूज करे। करेक्ट। Right. कस्टमर के पास बेनिफिट नहीं मिला उसको कि वो पूरी रिमेनिंग लाइफ उसको यूज करे, उसको पूरा बेनिफिट ले असेट का। डिस्पाइट हैविंग फिजिकल पोजीशन फॉर 5 years, स्टिल उसके पास पूरे बेनिफिट सब्सटेंशियली और बेनिफिट यूज करने का या रिमेनिंग बेनिफिट यूज करने का मौका ही नहीं मिला उसको। व्हाई वी आर, बिकॉज वी आर सेइंग वी आर गोना रीपरचेज इट इन आफ्टर 5 years. Hmm. Hmm. As a result, the entity accounts for repurchase contract. As a result, the entity accounts for the contract as either lease or या तो फाइनेंस। क्योंकि वो सेल तो है नहीं, तो हम प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं करेंगे। सेल होता तो प्रॉफिट और लॉस बुक करते हैं। बट दिस Right. डज नॉट सीम्स टू बी अ परचेज सेल transaction. It seems that it's either a lease transaction or a finance transaction. And how it's lease or finance, that we have seen in this example. Correct?
A lease if a repurchase price is less than the original selling price. Same है. हम्म. Repurchase price is less than ओरिजिनल original पे. purchase price. Financial arrangement if a repurchase price is more than the original selling price. 10,000 का है but repurchase is 12,000. गॉट. Correct? If an entity has an obligation to repurchase at a customer request and this is the lower the selling price, the customer is likely to exercise the right. The customer is effectively paying entity to use a specified asset for a period of time. So the contract would be lease. कुछ समझ आया? कुछ. नहीं. If an entity has an obligation to repurchase the asset, entity के पास obligation तो है, but कहाँ पे? The third part, obligation to repurchase at customer request. कस्टमर चाहेगा तो ही ऑब्लिगेशन है. ठीक है. और व्हाट राइट. कस्टमर इज सेइंग एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट. सेम 10,000 का 8,000 में सेल करने को कह रहा है वो रीपरचेज. द हम्म. कस्टमर इज लाइकली टू एक्सरसाइज द राइट. द कस्टमर इज इफेक्टिवली पेइंग द एंटिटी टू यूज ऑफ द स्पेसिफाइड असेट. इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 का कस्टमर ने खरीदा हमसे. कस्टमर नाउ फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू 8,000 उसको ऑफिस बेच रहा है. इसका मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो असेट लीज पे लिया. क्यों लीज पे लिया? हम्म. लीज पे क्यों लिया? क्योंकि या इट्स इफेक्टिवली पेइंग एंटिटी फॉर द यूज. 2 मिलियन का जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, वो उसके यूज इफेक्टिवली उसका यूज करने का कॉस्ट आ रहा है ना. हाँ. पहले तो 1,000 में खरीदा बट बेच भी तो 8,000 में दिया ना, तो इसका मतलब 200 ही क्या उसका खर्चा आया 2,000 का. और हम्म. 2,000 का क्या खर्चा हो सकता है? उसने जो यूज किया उसका ही खर्चा है ना. और ये डेप्रिसिएशन लगेगा ऐसे. करेक्ट. डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो वो तो सेलर का पार्ट है. बट डेप्रिसिएशन वैसे नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई कार ली लीज पे. हम्म. फॉरगेट अबाउट लीज. मैंने आज 1,000 पे कोई चीज खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल कार ली. आफ्टर 5 years आई एम सेइंग कि मैं उसको वापस सेल कर दूंगा. ठीक है, टू द सेम एंटिटी जहाँ जिसको मैंने खरीदी एट 8,000. 1,000 पे खरीदी, 8,000 पे आई एम सेलिंग दिस कार. इसका मतलब, और मैंने कार को 5 साल यूज किया उसको. ठीक है, आई यूज इट कार फॉर 5 years. तो 2,000 का जो खर्चा है दैट इज इक्विवेलेंट टू माई यूजिंग. मतलब वो मैंने यूज किया उसका ही खर्चा आ गया ना मेरे लिए तो, बीइंग एन राइट. कस्टमर. राइट. करेक्ट. तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया? लीज ही हो गया ना, एक टाइप का लीज. लीज रेंटल अग्रीमेंट. हाँ. रीच कैन ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड के लिए यूज करने का उसको टाइम मिला. उसका उसने कॉस्ट क्या पे किया? 2,000. अंडरस्टूड? एग्जैक्ट. परफेक्ट. यस. तो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग कि the customer is effectively क्या? It's paying the entity to use a specified asset for a period of time. So the contract would be lease in accordance with IFRS 16. गॉट इट. ये चीज याद रखना, यूज फॉर अ स्पेसिफाइड एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम. करेक्ट. हम्म. if the repurchase price if the repurchase price the second example, if the repurchase price is more greater than the original selling price, then the contract is a finance arrangement. Understood? कैसे finance arrangement है? If you could explain. The second example, like we are selling for 10,000 and we are repurchasing for 12,000. Correct. So So it's a loan, in na? that, It's a kind yeah, of a loan that yes, I've taken, and the 2,000 difference which I'm paying is is nothing the but the interest part, interest. Yeah. which I, which I'll. Okay. So one more question. क्या ये 2,000 का एक ही दिन में एट द सेम टाइम में 2,000 का बुक कर दूंगा रेवेन्यू, सॉरी इंटरेस्ट कंपोनेंट, और ओवर द पीरियड ऑफ 5 years थोड़ा थोड़ा करके करूंगा? नहीं, एक ही बार में. नो. पर ओवर द अपन पीरियड तो ऑफ टाइम. 5 साल बाद खरीदेंगे ना. तो अक्रूवल हम अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे करते हैं? अक्रूवल. अक्रूवल मतलब जो चीज जो साल में हो रही है उसको दिखाना जरूरी है. अक्रूवल कॉन्सेप्ट. राइट. ऐसा नहीं कैश बेसिस पे कर रहे हैं कि जब कैश मिलेगा, जब कैश देंगे तब हम सारी चीज अकाउंट करेंगे, तभी उसी टाइम पे 2,000 का सेम बुक कर देंगे क्योंकि ये 2,000 का हमने इंटरेस्ट पार्ट पे किया. नहीं, हम्म. अक्टूबर मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक ईयर में उसकी वैल्यू है ना, हर एक साल
हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, द कस्टमर इज यूजिंग, करेक्ट। तो हर एक साल का थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट दिखाना अच्छा रहेगा ना, हाँ। करेक्ट ना। कोई कोई बैलेंस शीट देख रहा है फ्रॉम अ बैलेंस शीट यूजर, जो बैलेंस शीट यूज करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम्म। देख रहा है, अगर वो देखता है, अम, वो क्या सोचेगा, वो देखेगा पहले 4 साल तो कोई खर्चा ही नहीं है इंटरेस्ट का, फिफ्थ ईयर पे आ गया डायरेक्टली 5,000 का खर्चा, 2,000 का खर्चा आ गया, पीएल हाँ। में बुक कर, इसका मतलब वो क्या समझेगा, मिस इंटरप्रिट हो जाएगा ना, वो समझेगा या तो कंपनी ने बड़ा लोन लिया है सेम ईयर में, हम्म। तभी इंटरेस्ट पर इतना बड़ा पे कर रहा है। बट एक्चुअल में हाँ। क्या है, वो लोन तो 5 साल का था जो धीरे धीरे आ रहा था, 10,000 का लोन हर 5 साल का था। तो राइट। एट द एंड ऑफ 5 ईयर दिखाना इज मोर सेंसिबल, और ओवर द पीरियड ऑफ दिखाना इज मोर सेंसिबल, कि ओवर उसको द पता पीरियड। लगा, करेक्ट। थोड़ा हम्म। थोड़ा दिखाओ ताकि यूजर्स को भी इजी रहे। जो हम शो करना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, हम फाइनेंशियल पोजीशन अपनी कंपनी की शो कर रहे हैं ना, क्या है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। हम्म। तो हर साल उतना पे कर रहे थे इफेक्टिवली, तो वो बेटर ऑप्शन राइट फॉर राइट। मोर फेयर प्रेजेंटेशन, करेक्ट। अंडरस्टैंड। हम्म। ओके, bill and hold is done, contract for the last topic which we are left with, the contract one. Contract cost a good one. Let's test your knowledge from your previous topic, if you could remember. What about substance over form? Sorry, substance, Substance over form. substance over form ना, बेसिकली जो दिख रहा है वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है वो कुछ और दिखा रहा है। सब्सटेंस जो है वही होना चाहिए, Okay. उसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस जो Hmm. है और क्या हम दिखा रहे हैं, उसके बीच का डिफरेंस, Right. करेक्ट। Let's take an example. If somebody say, and you have to answer this, ठीक है, from your previous knowledge of IFRS 15, 5 step model link करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। Yes. If you go to purchase Apple iPhone, there are two options. Purchase, purchase only phone and get standard 1 year वारंटी, करेक्ट। 1 साल की वारंटी Hmm. आती है आईफोन। Hmm. सेकेंड ऑप्शन ये तो है ही है, एंड व्हाट इट्स सेइंग, और परचेज एक्सटेंडेड वारंटी for 2 more years. So my question is, how many performance obligations are there in each option? Answer. Hmm. एकदम ब्रॉड वे में सोचना, डोंट गो विद द रट्टाफिकेशन और एनीथिंग, थोड़ा सा ब्रॉड प्रैक्टिकल में सोचना कि if this is the case then how should entity should determine its performance obligation. Hmm. You have 3 minutes to solve this. I'll come back.
हेलो। Yes, I'm done. हम्म। So, as per the concept that you have taught, हम्म। the two conditions for performance obligation, हम्म। uh, I understood that the two options that are available by purchasing an Apple iPhone, हम्म। these two conditions will be provided by other sellers as well. It's not हम्म। just with me. So there is no specification or specialization. So in हम्म। the first option there is a standard warranty कि 1 साल का तुम्हें वारंटी तो मिलने वाला है. हम्म। और सेकंड ऑप्शन में वी हैव टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. स्टैंडर्ड तो मिलेगा ही लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी. वेरी नाइस यार, वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस। लेट्स रीड दिस थियरी नाउ। वारंटी, standard warranty. Customer does not have option to purchase the warranty separately and provides only assurance. Customer स्टैंडर्ड वारंटी क्या है? इट्स विद द प्रोडक्ट, हम्म. प्रोडक्ट के साथ ही मिल रही है वो चीज। हम्म. अगर कुछ नहीं भी लेते तो वो नहीं खरीदते, ऐसा नहीं कि अलग अलग बेच रहे हैं, नहीं, एक ही में बेच रहे हैं। हाँ. और स्टैंडर्ड है। फीचर्स हम्म. क्या है? वारंटी इज इंटेंडेड टू सेफ गार्ड द कस्टमर असेट, कुछ डिफेक्ट वगैरह हुआ तो that will recover. Such service is not recorded separate performance obligation. Does not provide any incremental service to customer. ऐसा कुछ इंक्रीमेंटल सर्विस नहीं दे रही कि अगर परचेज करोगे 2 साल का कुछ मिलेगा, 3 साल का मिलेगा, नहीं। सच सर्विस इज नॉट रिकॉर्ड देयर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अकाउंटिंग क्या होगा? रिकॉर्ड फुल रेवेन्यू विदाउट रिडक्शन फॉर वारंटी कॉस्ट if Okay. measure reliably accrue separately at a cost of sale as per IAS 37. If not, majorly do not recognize till warranty period expires. What it's trying to say? परफॉर्मेंस, फर्स्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वन है इन फर्स्ट केस। Right. तो अगर इफ यू कैन रिलायबली मेजर द कॉस्ट ऑफ बोथ बीइंग एन एंटिटी, कि अगर आईफोन की कॉस्ट मेरी 100 है एंड स्टैंडर्ड वारंटी ऑफ 1 ईयर विल कॉस्ट मी 10, अगर कुछ भी नहीं हुआ फोन का तो फिर तो वारंटी का कोई कॉस्ट ही नहीं है, बट स्टिल वो वारंटी का वही होता है कि दे यूजुअली एस्टिमेट, द मैनेजमेंट यूजुअली एस्टिमेट कि ईयरली हाउ हाउ मच वी आर वी गोइंग टू इनकर, एंड बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स बुक रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन सर। Right. Right. ठीक है, प्रोविजन बेसिकली लायबिलिटी कि Hmm. 10 आईफोन, इफ एनुअली आई एम सेलिंग 10 आईफोन, देन आउट ऑफ 10 आईफोन्स 2 आईफोन्स माइट गेट defective and we can get provision claims, basically the insurance claim। Right. तो उसके बेसिस पे वो अपना प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे एज पर IAS 37। इसका मतलब क्या है? कि इफ एन एंटिटी कैन रिलायबली मेजर, अगर रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, द अक्रू बेसिकली द अक्रू सेपरेटली एज कॉस्ट ऑफ सेल, अक्रू बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Okay. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे डिसाइडेड, इफ दे आर रिलायबली मेजर, कि वो रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं कि मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी, वारंटी कॉस्ट विल बी 10, ओके, Hmm. 1 साल की वारंटी है, सेम दिस डिवाइड बाई 12, इसका मतलब मंथली 0.833833 का इंश्योरेंस वारंटी साइड से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। आईफोन का तो डे वन पे रिकॉर्ड हो जाएगा। Right. दैट्स व्हाट इट से कि अगर रिलायबली मेजर कर पा रहे कॉस्ट को, फिर तो अक्रूल ही करो। डोंट थिंक, क्योंकि वारंटी 1 साल की है ना, तो एक Hmm. सेम टाइम पे बुक करना रेवेन्यू, इट्स मोर it will misinterpret the financial, and if you are able to measure it reliably, go with the over a period of time concept for वारंटी Hmm. पार्ट, क्योंकि आईफोन तो डे वन पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जा रहा है। Hmm. तो 0.883 एनुअली जाएगा एज रेवेन्यू। ठीक है, इफ नॉट, अगर 10 मेजर नहीं कर पा रहे 10 का,
कंबाइंड कॉस्ट इज 110, तो फिर तो सेम टाइम पे बुक कर दो. डू नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टिल, अगर नहीं कर पा रहे तो रेवेन्यू, इन शॉर्ट, जब तक एक्सपायर नहीं हो रहा है वारंटी तब तक रिकॉर्ड मत करो. हम्म. करेक्ट. इन शॉर्ट देखना है कि क्लेम आ रहे कि नहीं आ रहे, ओके. क्योंकि वो अपना खर्चा हो जाएगा ना फिर तो रेवेन्यू उतना नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, राइट. क्योंकि कॉस्ट भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स पर. हम्म. एक्सटेंडेड वारंटी इट्स अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. कैसे? या तो एंटिटी हैज ऑप्शन की सिर्फ स्टैंडर्ड आईफोन परचेस करे और स्टैंडर्ड वन वन ईयर वारंटी. दैट्स व्हाट आई डिड. और या तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है कि आफ्टर वन ईयर एक्सटेंडेड 2 साल की वारंटी भी एक्स्ट्रा उसको मिलेगी, फॉर विच ही और शी हैज टू पे सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years, and he'll get 2 years extended warranty. Not for 2 years. For example, if option is saying pay 50 more, this is the cost of both standard cost option. Second option, ये है तो थियरी बट जस्ट मैं खाली एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिकल में यस. एक्सप्लेन करता हूँ. यस. यस. सेकंड ऑप्शन में क्या है कि ये तो पे करना ही है क्योंकि स्टैंडर्ड वारंटी आ ही रही है. हम्म. आई एम सेइंग पे 50 मोर एंड यू विल गेट 2 years एक्सटेंडेड वारंटी. ओके. करेक्ट. राइट. तो 100 का रेवेन्यू डे वन पे रिकॉर्ड हो जाएगा, हम्म. 10 का 12 months, 50 का आफ्टर 2 years. डे वन, 24. करेक्ट. यस. We are done with warranty and principal arrangement also done. Contract cost, yeah, contract cost. Last contract cost is pending. Let's learn what is contract cost. Contract cost. I am a builder. ओके. ठीक है. I want to construct a building, and to construct a building I need a contract. ना, I need customer to give me contract. यस. Correct. उस contract को achieve करने के लिए the expenses I'm incurring expenses to obtain the contract and the expenses to fulfill the contract, we are going to capitalize as an asset in our books of account फॉर बोथ द for, कॉस्ट. for both the cost. And the cost types of cost are as follows. Just from your logic, क्या हो सकता है अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को पाना है? ठीक है. हाँ. We want to achieve that contract. We want that contract to build a building, etc. What cost are we going to incur? um First of all, architect fees to develop the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो फिर हम लाइक पिच कैसे कर पाएंगे कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखो एंड गिव अस द कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, अपना तो काम ही है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलेगा फिर ही हम कर पाएंगे ना. यू आर राइट. यू आर 50% राइट. टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को अचीव करना है तो व्हाट कॉस्ट विल आई इनकर बीइंग एन एंटिटी टू डू बिजनेस? कमीशन कॉस्ट. मैं मेरे सारे एजेंट्स को बोलूंगा गो इनटू द मार्केट, एडवर्टाइज करो. राइट. या. करेक्ट. आर्किटेक्ट तो कब आएगा? एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसके बाद हम आर्किटेक्ट बताएंगे कि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू बिल्ड आर्किटेक्ट पीस. हम किसी एक्सटर्नल पार्टी को हायर करेंगे आर्किटेक्चर के हम्म. लिए, हम्म. इंटीरियर डिजाइन के लिए. हम्म. फिर सेटअप कॉस्ट, उस जगह पे अगर बिल्ड करना है वो बिल्डिंग सेटअप करना पड़ेगा. This cost will incur after getting contract, right? करेक्ट. करेक्ट. टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट हाँ. मिल गया, हम्म. 10 फ्लोर्स बनाने हैं.
फुलफिल करने के लिए सेटअप करना पड़ेगा, क्लीनिंग हम्म करना पड़ेगा, उस एरिया को पूरा लेवलिंग करना पड़ेगा। हम्म। करेक्ट। यस। तो जैसे सेटअप कॉस्ट, आर्किटेक्ट कॉस्ट, एवरीथिंग, मटेरियल, नो नॉट मटेरियल। एवरीथिंग टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल भी नीड ना टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट मटेरियल या कैसे या करेंगे, या मटेरियल भी ऐड होगा। यस, राइट राइट। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। करेक्ट। हम्म। So this both the costs to obtain and to fulfill both will be capitalized. Yes, basically all costs to fulfill will be capitalized Right. and will be amortized over Yeah, the because we are capitalizing. period that the performance obligation is satisfied। Right. लॉजिक पता चला क्यों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के पीरियड तक का ही हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 5 साल तक की है, तो हम 5 साल तक ही अमोर्टाइज करेंगे। क्या लॉजिक है उसका? कि उसके बाद तो हम हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे ना, तो वो हाँ, हमारे because बुक्स our में क्यों आएगा फिर? because our performance is completed at that time. करेक्ट। तो जब Hmm. तक हम बना रहे हैं तब तक वो हमारी चीज है, तो हमारी चीज है तो हम अमोर्टाइज करेंगे। कितने टाइम के Right. लिए? जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का पीरियड है तब तक। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल। Right. करेक्ट। Understood. Yes. आर पीरियोडिकली रिव्यूड फॉर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट विल लर्न। ठीक है। Okay. बेसिकली यहाँ पे इसका ये मीनिंग है इम्पेयरमेंट का, कि हम एनुअली देखेंगे कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ आ गया मार्केट में कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज नहीं चल रही, तो इसका मतलब क्या? Hmm. रिडक्शन इन वैल्यू। इफ Hmm. समथिंग न्यू कम्स अप इन द मार्केट and you know market how volatile the market is, Yes. if something new comes up in the market and says that no, these types of buildings are not no longer the updated one, or तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। Hmm. करेक्ट। तो अगर इम्पेयरमेंट हुआ तो हम इम्पेयर भी करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा विल चार्ज इट टू पीएनएल। करेक्ट। Okay. एंड accounting of impairment we are going to learn today on IAS 36। Right. So this is the contract cost. Done. Now the last one which we are left is contract assets and contract liability. You know contract liability. What is contract liability? Wha- लाइबिलिटी हम कब रिकॉर्ड करते हैं? कोई भी चीज कभी भी एडवांस में मिल जाए और हमने उसको उसके अगेंस्ट कुछ दिया नहीं है, तभी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट। Yes. इफ somebody is paying us for हाँ. nothing, so it's a loan for ourselves, that's what we learn। करेक्ट। Right. Yes. हमने रीपर्चेस अग्रीमेंट में भी वही पढ़ा। अगर हम कोई चीज महंगे में बाद में दे रहे हैं, 1000 का परचेस करके, 10,000 का, फॉर एग्जाम्पल 10,000 12,000, तो इट्स लोन ना। क्योंकि हाँ. हम पहले कह रहे हैं कि हमने असेट को दिया, बट अग्रीमेंट कह रहा है कि असेट को वापस भी ले लेंगे। तो इन शॉर्ट प्लस Hmm. माइनस असेट प्लस असेट वापस आ गया, तो जीरो हो गया। इसका मतलब कुछ दिया नहीं ना कुछ लिया, बट क्या आया? पैसा 10,000 आया, पैसा गया 12,000। तो इट्स Hmm. लोन। Interest. Right. करेक्ट करेक्ट। तो Yes. लाइबिलिटी क्या होती है? हाँ, हमने कोई चीज ली, इन अगेंस्ट कुछ दिया नहीं। Hmm. करेक्ट। तो हमने, हमको पैसा मिला, वी आर बीइंग पेड, बट इन रिटर्न वी डिडंट satisfied our performance obligation yet. So till the time we didn't satisfy a performance obligation, it's a liability for us. Yes. Once the performance obligation is satisfied over the period of time, the liability is going to be reversed, debit liability, Hmm. credit revenue over the period of time. We have Hmm. learned this in our IFRS 15. Yes. Correct. Yes. If I can show you, I can show as well. Deferred. I think I have explained somewhere. So
Is it being not shown? So let's take an example. Contract is for 5 years. Payment received in advance at contract CP contract prices of $10,000. Payment received $10,000. Hmm. ठीक है. सेम डे क्या हो जाएगा? डेबिट कैश रिसीव, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. वाई? क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डे वन पे हमने एक भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपने सेटिस्फाई की नहीं है, तो इट्स लायबिलिटी फॉर अस. So 10,000 we received, straight it goes to liability, non-current liability. After year one, we satisfy year one of performance obligation after 5. Hmm. So debit would be contract liability, credit would be revenue. Correct? Hmm. Correct ना? पूरा contract का cost is 10,000 divided by 5. So 2,000. Out of 10,000 of liability, 2,000 have been reduced. Correct? Right. Or the reduced part we record booked in our revenue. Same for each year. Year 2, 3, 4, 5. करेक्ट. ऐसे Yes. 5 साल तक जाते जाते हमारी लायबिलिटी देखने जाए तो 0 हो जाएगी. ईयर 2, 3, 4, 5. डेबिट डेबिट होते होते लायबिलिटी कितना हो गया? अच्छा, 8,000 ही हुआ. दिस इज द 5 ईयर. करेक्ट. 10,000 डेबिट 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 लायबिलिटी. तो जब डे वन पे हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड करती, वो रिवर्स हो गई आफ्टर 5 ईयर्स. क्यों? क्योंकि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया. Hmm. और सेम हर साल 2,000 रिकॉर्ड करते हुए 2000 the total revenue is 10,000 Right. after 5 years. So this is the concept of contract liability. कि कोई चीज अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है और इन अगेंस्ट वी आर रिसीविंग पेमेंट इन एडवांस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट असेट, बेसिकली इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, अर्न समथिंग कॉल्ड एज अनअर्न्ड रेवेन्यू, if you could agree, because this is the Yes. revenue which we have not earned yet, because we have not satisfied the performance obligation. Once we satisfy the performance obligation, it's an earned revenue, but currently it's unearned, right? Hmm. CL now CA, contract asset. Contract asset is something basically means that we have provided the goods and services to the customers, we have satisfied the performance obligation, but payment has not been received. But you will tell कि ध्रुव, अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है एंड वी हैव satisfied a performance obligation, so it's an account receivable na. 10,000 will go in account receivable if we take same example over here. Hmm. Correct. But Right. what happens in construction industry is that the contract says that you cannot bill the revenue, although the contract price is 10,000 and duration is 5 years, but you cannot bill the revenue after 2 years. Hmm. इसका मतलब 2 साल तक का सेटिस्फाई तो कर दिया मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बट मैं बिल नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज सेइंग कि बिलिंग जो होगा 3 साल बाद होगा, मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड करंटली आई एम स्टैंडिंग एट ईयर 2. करेक्ट. Right. So it's an unbilled revenue. It's a revenue, but it's not billed yet. Billed, Hmm. invoice, uninvoiced revenue, if you want to say that way.
हम्म तो वही सेम चीज होगा अगर हम बुक बिल इनवॉइस कर देते हैं, कोई भी चीज इनवॉइस हो गई तो वो अकाउंट रिसीवेबल में चला जाएगा। डेबिट, क्योंकि पेमेंट अगर नहीं आया है तो डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू, दिस इज द एंट्री टू राइट। रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट पे ही है, पेमेंट तो अभी तक नहीं आया, बट हमने बिल भी तो नहीं किया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस कि 3 साल के बाद होगा। हम्म करेक्ट, तो एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, जैसे स्मॉल डिफरेंस, डेबिट कॉन्ट्रैक्ट असेट्स, क्रेडिट रेवेन्यू। करेक्ट, रिसीवेबल में नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, बुक बैलेंस शीट में दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। ओके। करेक्ट, और उसी में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट्स एन अर्न रेवेन्यू। राइट। अनबिल्ड रेवेन्यू विच इज नॉट बिल्ड yet. Understood? हम्म यस। Okay. Let's read theory part of it. IFRS 15 is not prescriptive about presentation of contract asset and liability. As an alternative, the term contract asset, IFRS 15 allows the term receivable and WIP to be used if revenue exceed the cash received. This would be included as a trade within trade receivable. Any presentation would need, it's a bit technical. Just a second, I'll give you the easier language explanation from the portal itself. What are contract assets and liabilities? IFRS 15 includes contract asset and entities right through consideration in exchange for goods and services. हम्म राइट टू रिसीव तो है, गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट टू रिसीव तो हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ भी सेम कि 2 साल बाद बिल कर इनवॉइस कर पाएंगे, या तो इस चीज के बाद इनवॉइस कर पाएंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, या तो कुछ कंडीशन डाली हुई कि इस चीज या तो ये सर्विसेज भी सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद यू कैन बिल द एंटायर इनवॉइस एनीथिंग। बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, कुछ चीज की वजह से वी आर बीइंग होल्ड टू इनवॉइस टू बिल दैट गुड्स एंड रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब तक बिल नहीं किया, द अकाउंट रिसीव द right to receive part will go in contract asset and credit unbilled revenue. Correct? Just break down this definition. An entity's right to consideration. Consideration is payment in exchange of goods and services that the entity has transferred to customer, जो customer को दिया हुआ है. When the right is condition, कुछ condition है बीच में, कुछ हम्म limitation condition है on something other than the passage of time. ठीक है, कुछ कंडीशन है, उसकी वजह से वी आर बीइंग पुट ऑन होल्ड टू इनवॉइस दैट असेट, इनवॉइस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट we cannot record that part, that right to exchange in account receivable because we haven't invoiced that. So the difference, that part will go in account receivable. Oh, ओके। sorry, contract asset. Correct. यस। And contract liability is what an entity's obligation to transfer the goods and services to the customer for which the consideration has been received. Advance में receive हो गया and it's an obligation कि अब वो performance obligation satisfy करना है. हम्म Correct. अंडरस्टूड। इसका एक normal formula दिया हुआ है, usually simple formula, but you don't even need formula yet, but still अगर follow करना है तो, but formula का भी logic I'll explain you. What the formula is saying?
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टिल डेट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू गुड्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये कैसे पता लगेगा? कितने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दिए मैं, कितने ईयर्स के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिए मैं। फॉर एग्जांपल 10 साल, 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ड्यूरेशन Hmm. इज 5 ईयर्स, तो एनुअली 2,000 करना था। Right. ठीक है, वी एट ईयर वन द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज शुड बी 2,000, बट Hmm. लेस अमाउंट क्या है? अमाउंट इनवॉइस टू डेट, आज की तारीख से कितना इनवॉइस हो चुका है? जीरो, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इन माई कॉन्ट्रैक्ट से 2 साल बाद हम कंबाइंड 2 ईयर्स का इनवॉइस कर सकते हैं, इनवॉइसिंग कर सकते हैं। Okay. तो 2,000 का क्या आया? कॉन्ट्रैक्ट असेट। अंडरस्टूड? Hmm. सेम चीज अगर मैं कहता हूँ कि बस यही चीज नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती, तो क्या होता? कंडीशन नहीं होती इसका मतलब मैं इनवॉइस, मैंने 1 साल का सेटिस्फाई किया तो मैं इनवॉइस कर देता उस चीज को, या आफ्टर Ah. 5 ईयर्स आई सेटिस्फाइड ईयर वन ऑब्लिगेशन। ठीक है, Right. तो और Right. पेमेंट उसका मेरे को मिला नहीं है, तो एंट्री अभी क्या बन रही है? एंट्री डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स क्रेडिट रेवेन्यू, करेक्ट? कितने से? 2,000 से। Okay. एंड अगर नहीं, अगर इनवॉइस कर दिया होता तो सेम एंट्री होती, बट या डेबिट क्या होता? अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अब तो रिसीवेबल है ना। सी Level. बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों असेट असेट है, तो बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये Hmm. अकाउंट रिसीवेबल भी असेट है, कॉन्ट्रैक्ट असेट भी असेट है, but Hmm. the only difference is that in contract asset, that particular exchange of goods and services is not being invoiced, and vice versa. Account receivable में that being invoiced, but only thing is that payment we haven't received, इसे हम receivable में दिखा रहे हैं। Right. करेक्ट? Yes. एंड वंस, अगर अगर मैं कहता हूँ कि ईयर टू में सेम, अगर मैंने इन्वॉइस कर दिया, आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग टू यू दैट आई हैव इन्वॉइस दैट, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? सिर्फ आई वांट टू नो द एंट्री, क्योंकि इन्वॉइस हो गया तो अब दिखाना क्या पड़ेगा? एआर दिखाना पड़ेगा, और डे वन पे क्या दिखा रखा था? कॉन्ट्रैक्ट असेट्स। बेसिकली नेट ऑफ कर दिया ना, पहले डेबिट किया था कॉन्ट्रैक्ट असेट को, अब मैंने इनवॉइस कर दिया हुआ है, उसकी बिलिंग कर दी मैंने, तो मैंने उसको Hmm. क्रेडिट कर दिया, नील कर दिया, और Hmm. नए एआर रिकॉर्ड भी कर दिया सेम अमाउंट का। Right. Right. रेवेन्यू तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ ही था पहले से, Ah. 2,000 का, तो एक्चुअल में एंट्री बनी क्या? डेबिट एआर, सॉरी, डेबिट एआर क्रेडिट रेवेन्यू ही हुआ ना एंट्री तो, एक्चुअल में तो, क्योंकि ये तो Ah. नेट ऑफ हो गया ना, ये और ये। Yes. हाँ, करेक्ट? contract. तो ये हाँ. डेबिट, एआर रिसीवेबल इज डेबिट एंड क्रेडिट रेवेन्यू। अंडरस्टूड? So Hmm. this is the logic for contract asset and contract liability, nothing else. So we are done with IFRS 15 full fledged, and you are now obliged to solve all the questions. Okay. Now it's your I'll do obligation. that. I've satisfied my obligation. Okay. So let's take a break, lunch break of 30 Okay. minutes. We'll meet at 1, 12:30. Done. Okay? And we'll start Okay. new topic, boring cost, with a Okay. fresh mind. Okay? Yes. Bye.
Hello. Hello. Yes. Yes, so let's start with IAS 36, Impairment of Assets. Which chapter is this? In book, I think it's It's chapter 4. it's chapter 4, page number 75. Yes. Why we are learning this chapter, do you know? Any idea? And I have given a bit of gist in every chapter, and we have seen this topic is being touched in every chapter at some This point. is this is the kind of expense that we deduct from cost. Which cost Um, the original cost. of asset Yes. and the reason of deduction. Um, Sorry, but I don't remember. See, in IAS 16, IAS 40, we learn revaluation surplus, which is Hmm. increase in the value of assets. Hmm. Now we are learning decrease in the value of asset. How to account decrease in the value of asset. Okay. Okay, the reason could be anything. Uh, Asset got obsolete, technology got changed, new technology got introduced, outdated technology, outdated product, uh, negative publicity of brand reputation. Understood? If there is negative publicity of brand, which asset is impaired? Which asset is impacted? If you could remember from IS 38, I have given you the biggest hint. Brand. Negative impact. Yeah, negative impact on the reputation of any company's brand image, brand name. Goodwill. Correct. The goodwill is impaired, brand name. So this is all we're going to learn in this chapter. Okay. Okay. Let's go with the definition. Hmm. The objective is to set rule to ensure that the asset of entities are carried at no longer more than recoverable amount. For example, see the objective is very simple. If the assets market value is 10,000, Huh. for example, we have purchased the asset as 10,000. The carrying amount after 2 years is 8,000, but the market value is 6,000. So what do you think? Which one is the best value to record it in our books of account to show fair presentation, to avoid misrepresentation, to satisfy prudence concept, I at think it should be market value. market value. And what is market value? We'll learn. The objective to set rules to ensure the asset of an entity are carried at no more than their recoverable amount. And the market value is 6,000, which means that after 2 years, there are assets or Hmm. buyers who are in a market and who are ready to buy that asset as 6,000. Correct? This is market value. Hmm. Hmm. Correct? So what does it mean? It means that that assets is the recoverable value. Which recoverable value? 8,000 or 6,000? We recorded at 8,000, but currently it's recoverable amount. There are buyers and into the market who are ready to purchase at 6,000. So for us, it's only 6,000 are recoverable out of 8,000. Right. Understood? Yeah. Yes. So if you just told that we should record it at on market value. So the market value is 6,000 and the carrying Hmm. amount was 8,000. Hmm. So what do you think? The deduction of 2,000, what does it mean? It simply means impaired asset. Impairment. Uh, Impairment is equal to loss. Impairment is equal to reduction in the value of asset. okay.
correct? So the 2000 loss should be go in our books of account. This is the concept Okay. in P&L because it's our expense reduction in the value of asset, Hmm. impairment loss. Hmm. The terminology is used is that impairment loss. Impairment means reduction in the value of asset. Right. Okay, asset की Yes. value गिर जाना. The assets which are excluded are as follows. Inventories, because inventory का जो reduction in the value of asset होता है, that will be accounted as per IS2. उसका खुद का standard है inventory का. Hmm. Correct. Construction contract IFRS का खुद का standard है. How to record that? Right. IFRS 15. That's what we learn. Deferred tax put on hold. Deferred tax we haven't studied, so put on hold. Okay. Employee benefit also put on hold. Basically ये सब जो जो categories of assets है, Hmm. those are being impaired, but उनका जो impairment होगा वो उनके particular standard के हिसाब से रिपोर्टिंग होगी, उसकी अकाउंटिंग होगी. Okay. करेक्ट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 खुद का स्टैंडर्ड है, तो जो इम्पेयरमेंट होगा वो उसी के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के गाइडेंस के हिसाब से रिकॉर्ड होगा. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मेजर एट फेयर वैल्यू IS40 भी स्टडीड, एंड उसका जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट है हमने पढ़ा है, कहाँ जाएगा वो? PNL. P&L. तो उसका गाइडेंस ऑलरेडी IS40 में दिया हुआ है. Hmm. IFRS 5 में भी होगा नॉन करेंट असेट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, बट विल स्टडी. बेसिकली द जिस्ट इज दैट जिस जिस स्टैंडर्ड के खुद के कॉन्सेप्ट है हाउ टू रिकॉर्ड देयर इम्पेयरमेंट ऑफ देयर असेट्स Okay. विल फॉलो देयर स्टैंडर्ड्स. जिसके स्टैंडर्ड नहीं है वो हम इसमें अकाउंट करेंगे. Understood. करेक्ट. Yes. ओके. व्हाट डज द स्टैंडर्ड से? Entities' assets shall not be carried at amount more than their recoverable amount. That's what we learn. That is the basic objective of the standard. Hmm. कि कोई भी स्टैंडर्ड अपने रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड. क्योंकि अगर मोर देन रिकवरेबल अमाउंट के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन. वी आर ओवर वैल्यूइंग आवर असेट्स व्हिच इज रॉन्ग. वी कैन नॉट misstate our financial statements. Asset is impaired when asset is impaired. Carrying amount 10,000, recoverable amount 6,000. Correct? Hmm. 6,000. बीच में reduction. Correct? And what is the Understood. reduction called? Impairment loss. Okay? Yes. Now the question comes, how do we record? How do we assess the recoverable amount? Hmm. So the standard gives us a bit of guidance to record the recoverable amount. How to assess? Definition. We have just understood what is impairment loss. Carrying difference of carrying amount and recoverable amount. Now the question comes, how to assess the recoverable amount, because carrying amount तो हमारे बुक से carrying amount से पता लग जाएगा, पर recoverable Hmm. कैसे लगेगा? So the standard says recoverable amount basically assets fair value, उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है, लेस कॉस्ट टू सेल, उसको बेचने का कॉस्ट क्या आएगा. Okay. फॉर एग्जांपल recoverable amount higher of
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फिर वैल्यू इन यूज। अभी हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, तो उसी के पर्सपेक्टिव से विल लर्न। हम्म। फेयर वैल्यू इज, आज की मार्केट वैल्यू इज 100, बट उसका बेचने का ना कुछ खर्चा है, खर्चा आएगा, डॉक्यूमेंटेशन खर्चा आएगा, या तो उसको बेचने के लिए मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, थोड़ा सा किसी को कमीशन देना पड़ा कि कोई बायर ढूंढ ले, मैं तेरे को इतना कुछ कमीशन दूंगा, एक्स 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 अमाउंट का कुछ कमीशन दूंगा। तो दिस आर द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल्स, मतलब सेल करने का कॉस्ट। हम्म। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई पेड कमीशन ऑफ 1 रुपी, तो मेरा नेट रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? 99। सेंसिबल ना, क्योंकि जितना मेरे को मिलेगा मार्केट वैल्यू उतना, और उसमें से 1 रुपये मेरे को पे करना है, कॉस्ट टू सेल ही मेरा खर्चा है। तो राइट। नेट नेट इज द फेयर वैल्यू। करेक्ट। 99 इज माई एक्चुअल मार्केट वैल्यू। यस। और वैल्यू इन यूज से अगर मैं एसेट को ना बेचूं, क्योंकि मार्केट वैल्यू मैं कब डिसाइड कर रहा हूँ? जब अगर मेरा बेचने का मोटिव है। वैल्यू इन यूज मतलब अगर मैं यूज ही करता रहूँ इससे, फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइफ 5 ईयर ज्यादा है और नेक्स्ट 5 ईयर तक सर्वाइव करेगा सच, हम्म। और मेरे को ये हर साल 10-10 हजार का फ्यूचर कैश फ्लो लाके देगा एनुअली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। करेक्ट। यस। हम उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, डिस्काउंट करके। प्रेजेंट वैल्यू के 5 5 5 5 साल तक फ्यूचर कैश फ्लो देगा। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर, इसका मतलब 50,000 मेरे को 5 साल तक मिलेंगे। यस। प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी? 10,000। 10, नॉट 10,000, 10,000 इज एनुअल। एनुअली मेरे को कैश फ्लो मिल रहा है। कैश फ्लो मतलब उससे मैं कितना कमाऊंगा, माई अर्निंग कितनी, मेरी अर्निंग कितनी होगी उस असेट को यूज करके। या तो दो ऑप्शन है रिकवरेबल अमाउंट असेस करने का। हम्म। या तो मैं मार्केट में जाके मार्केट वैल्यू देखूं और उसका बेचने का खर्चा देखूंगा, अगर मैं बड़ा बेचने का मोटिव है। दूसरा है वैल्यू इन यूज, अगर मैं घर में ही उसको यूज करता रहूं, तो मेरे को आगे, तो मैं रिकवरेबल अमाउंट कैसे डिसाइड कर रहा हूँ? उसके अर्निंग के बेस पे, कि वो कितना, हाउ मच इज इट इज गोइंग टू गिव मी अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, फॉर इट नेक्स्ट यूजफुल लाइफ, ओके। टिल इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। तो माई assumption इज दैट एनुअली इट विल गिव मी 20,000 कैश फ्लो। 20,000 का प्रॉफिट कमा के देगा, इन शॉर्ट कैश फ्लो। ठीक है। हम्म। तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना टोटल टोटल अमाउंट हो जाएगा? 1 लाख। राइट। करेक्ट। अब उस 1 लाख तो मेरा है कि 5 साल बाद टोटल 1 लाख होगा। ठीक है। हम्म। उसकी यूजफुल लाइफ बाद, पर मुझे आज का चाहिए ना, सेम एज डिस्काउंटिंग, हम डिकमिशनिंग कर रहे थे। हम्म। डिकमिशन डिस्काउंटिंग 5 साल बाद का खर्चा है, आज की डेट में क्या होगा? 5 साल बाद की अर्निंग है पर 50,000, आज की डेट में क्या अर्निंग है? तो सेम उसको डिस्काउंट करेंगे। ओके। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी XYZ रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, डिस्काउंट किया और अमाउंट आ रही है यहाँ पे 99,000 लिख लेते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स लेट्स से डिस्काउंट होके 95,000 आ रहा है, मतलब 5 साल बाद द कैश टोटल कैश फ्लो इज 1 लाख, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टुडे बिफोर 5 ईयर्स? करेक्ट। हम्म। हाउ वी गॉट, वी डिस्काउंटेड इट। currently forget about discounting rate and all, वो तो आ जाएगा, तो you know how to calculate it, but this is a discounted price। ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट इज व्हाट, हायर ऑफ दिस टू, 95 और 99। ऑब्वियसली ना, मेरे पास दो ऑप्शन है रिकवरेबल अमाउंट। या तो मेरे को कोई चीज कह रही है कि अगर तू बेचेगा यू विल गेट 99,000, बट अगर इसको इफ यू कंटिन्यूसली यूज इन योर होम, इन योर एंटिटी बिजनेस, इट हम्म। विल फेच यू a profit of 95,000। ठीक है। ओके। So what I'll do, I'll say 95 का प्रॉफिट मिल रहा है और मैं आज ही बेच लूंगा, I'll get 99,000। Which one हम्म। is right? 99,000। करेक्ट। जो जितना जहां मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, I'll record that amount ना, यस। ऑब्वियसली। हम्म। तो इसलिए स्टैंडर्ड इज सेइंग हायर ऑफ बोथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अगर आप मार्केट में बेचने जाओ और घर में बिजनेस में चलाओ, क्या सीन डिफरेंस है दोनों का? तो दोनों का हायर अमाउंट विल बी योर रिकवरेबल अमाउंट। ओके। ओके। And if I say
that the carrying amount was in the books of account was dollar 1,20,000. सो मेरी रिकवरेबल अमाउंट क्या हुई? आर ए मेरा क्या हो गया? 99,000. हम्म 1,21,000 ठीक है, तो इम्पेयरमेंट मेरा कितना हुआ? 120 रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. 21 is my impairment loss. हम्म What will be the journal entry if you could say to me? loss to cash. Why cash? असेट की वैल्यू जा रही है ना. कैश कैश तो कुछ हाँ मिला ही नहीं है. राइट राइट हमने फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू इसलिए देखा कि अगर हम बेचते तो क्या 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 सिनारियो रहता हमारा, इसलिए हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से असेस किया है. बेचा थोड़ी है हम्म अभी तक. हम्म और वैल्यू इन यूज अगर बिजनेस में यूज करते रहते तो क्या प्रॉफिट मिलता? करेक्ट. डेबिट लॉस क्रेडिट असेट. असेट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि वैल्यू गिर गई ना 21,000 से. इसका मतलब अब जैसे मैंने एंट्री पास करी तो मेरे पीएनएल में लॉस होगा हम्म और मेरा बैलेंस शीट में असेट वैल्यू विल बी reduced. Correct. यस Okay. Now let's understand what could be the indicators of impairment. क्या क्या indicators हो सकते हैं कि we can assess that हमारी asset की value might have fallen down. Indicator external and internal. External decline market value. एडवर्स टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या तो जो करंट टेक्नोलॉजी है इट इज गॉट आउटडेटेड इसलिए asset की वैल्यू गिर गई होगी. हम्म इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन आ गया, इसका मतलब फ्यूचर में वो चीज मेरे को महंगी मिलेगी. करेक्ट. यस फ्यूचर में महंगी मिलेगी इसका मतलब करंट वैल्यू इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड अमाउंट ना. हम्म तो ये हो सकता है. द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसको होल्ड करना, विल विल कम बैक टू दिस. ओके बेसिकली मार्केट कैप, यू नो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस. ठीक है. अगर शेयर प्राइस गिर गए दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ना कि ब्रांड इमेज मस्ट माइट हैव फॉलन. हम्म करेक्ट. शेयर वैल्यू कभी गिरेगी. राइट तो सो दिस इज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर. करेक्ट. ओके नाउ इंटरनल कुड बी बिजनेस में पड़े पड़े खराब हो गया, ऑब्सोलीट. परफॉर्मेंस ऑफ असेट इज डिक्लाइनिंग. परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा. एसी लिया था, एसी ठंडा नहीं कर रहा, बिजली कूलिंग नहीं दे रहा है, कंप्रेसर खराब हो गया है, बार बार के मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है, रिपेयरिंग चल रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है. वैल्यू गिर गई. हम्म हम्म कैश फ्लो ऑफ एक्वायरिंग और ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दोस बजटेड. मतलब जब लिया था तब सोचा था मेंटेनेंस 5,000 आएगा, बट नाउ द मेंटेनेंस कॉस्ट इज कॉस्टिंग मी 6,667,7,000 अ मंथ. तो इसका मतलब खराब हो गया ना सेट, तभी इतना ज्यादा मेंटेनेंस ले रहा है. The cash flow for acquiring or operating or maintaining assets are significantly higher than those originally budgeted. Correct. Actual net cash flow are worse than budgeted. So जब परचेज किया था सोचा था आई विल गेट एंड कैश फ्लो ऑफ एनुअली 20,000, बट एक्चुअली मैंने देखा तो 15,000 ही दे रहा है प्रॉफिट हर महीने का, एनुअली या तो ईयरली के देखो. इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे इंडिकेटर की वैल्यू गिर गई है. करेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस आर द टॉप मोस्ट examples and indicators. Hello.
Hello. Yeah, sorry, it just happened suddenly. Yeah, no worries. So these are the indicators of impairment. So this Hmm. shows that our asset value might have fallen. Hmm. Correct? Yeah. Can you solve this question? You have 5 minutes to solve it. Excuse me, sir. Yeah. I don't know, but to calculate the recoverable amount, they're not given the cost to sale and also like So what is cost to sale? Uh, realizable value is what? Fair value less cost to sales only. That's what they have given to you. नेट करके ही दिया होगा ऑलरेडी नेट रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा नेट सब कुछ खर्चा सब कुछ कट कट करके नेट रियलाइजेबल कितना होगा ये इसका मतलब है
fair value less cost to sell क्या होता है? Recoverable in our example it was 99,000. 1 lakh was the market value and 1,000 was cost to sell. The Hmm. 99 is net realizable value. How much net I am going to realize if I am going to in the market and sell it. So this is the net realizable value. Got it. Got it. Okay. Done, sir. What is the answer for A? For A, I'm getting negative 20, Mm-hmm. and for B and C, it's positive 20. Okay. So what do you think? Why it's a negative 20? Is it an impairment, actual impairment, or it's not an impairment? No, it's not an impairment because carrying amount is More than the more, recoverable. yeah, no, it's less. Yeah, carrying amount is less than the recoverable. Correct? Yes. Carrying amount is 100 for A, and the value in use, the recoverable amount is 120, higher of net realizable value, and value in use 120. So actually, there is no impairment. For B and C, there is impairment of 2020 each. This is the solution. Like, what does this actually says? The following information relates to three assets. A, B, and C are the name of these assets. Carrying amount दिया हुआ question में 1000, 150, 120. No, no, I'm just asking for A, like how it's negative 20. Like, Yeah, what is the because actual question is reason? trying to confuse you. At one point of time, question is saying what is the impairment loss, but the carrying amount is more than less than the value in use. So there is no impairment in the. If you see in the answer, the impairment loss is nil. There is Hmm, no impairment ना actual में तो appreciate हो रहा है value. तो impairment is zero. हमें impairment calculate करना है. right. Question is saying correct. Got it. Now there are assets. We cannot assess them on individual basis, but we calculate their recoverable amount as a group. What are those assets? Let's Okay. understand. This is a gym, okay? Hmm, हर एक जिम में जो जिम ओनर होगा वो एक एक मशीन का देखने नहीं जाएगा. ठीक है. Basically the group of assets giving economic benefit for an entity. Correct. तो जिम hmm, में इतने मशीन्स होंगे, एक एक का तो करने नहीं जाएगा. तो ग्रुप ऑफ असेट्स, एक जगह पे ग्रुप ऑफ असेट्स, दे आर सेइंग that is if a group of asset generating independent cash flow, that those are known as cash generating unit. And if a independent asset is generating, that is independent asset. Understood? Let's see with the example. okay. Individual assets. Firstly, what is asset? Anything which is any asset which is giving us economic benefit for long term. Okay. And if
and that economic benefit we can assess from an individual asset. For example, a machinery, a big machinery, तो हम उसका assess कर सकते हैं कि how much economic benefit we are going to fetch from this machinery. Okay, but छोटी छोटी चीज है. For Hmm. example, एक big we have a office. Okay, ऑफिस में 10 चीज है. लैपटॉप, पीसी, फर्नीचर, फर्नीचर्स है, एयर कंडीशनर है, एवरीथिंग. ओके, सबका एक एक का करने नहीं जाएंगे. Right. व्हाट विल सी, दिस इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट, अ ग्रुप ऑफ असेट generating economic benefit. Okay, and what are those group of assets? AC, furniture, desktop, PC. क्या इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिल रहा है वहां पे? या तो कुछ मीटिंग्स हो रही है, एडमिन काम हो रहा है, एनीथिंग, कुछ तो हो ही रहा है ना काम. अंडरस्टूड? तो वो काम से वी आर गेटिंग Yes. इकोनॉमिक बेनिफिट ना. Yes. अंडरस्टूड? So those Yes. Yes. assets from which we cannot define the independent cash flow will merge with a group of assets called cash generating unit, and we determine their carrying amount. Sorry, recoverable amount. Let's read the definition. Cash generating unit. A CGU is the smallest identified group of assets that generate independent cash flow. Group of assets merged together called cash generating unit, and the group is compared with the group recoverable value. Understand? Yes. 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 This is the frequency of testing. Just what is the standard is saying. ये आपको ना, one more thing, हर एक चैनल में कहीं पे कहीं लिखा हुआ है एनुअली रिव्यू करना इम्पेयरमेंट के लिए. या तो सॉरी, Hmm. डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लाइफ, यूजफुल लाइफ है, वो एनुअली रिव्यू करना है कि नहीं करना है. Hmm. वेन एवर देर इज इंडिकेटर की, इंडिकेटर होगा तभी रिव्यू करना है, ऐसा हर एक चैनल में कुछ कुछ थियोरी लिखी हुई है. तो Okay. be mindful when you are revising all the theories, because you might be asked in theory part which Right. which list, which are the assets below needs annual review of impairment. Correct? So this is the frequency. Impairment testing कब कब करेंगे? First, a cash generating unit with goodwill or intangible asset with indefinite life. CGU के साथ goodwill भी आ सकता है. Entire brand. Okay, entire brand image is tied with the cash generating unit. Understood? पूरा एक समझ Okay. लो, एंटिटी, एक एंटिटी है, उसका एक डिपार्टमेंट ही कैश जनरेटिंग यूनिट है. उस एक डिपार्टमेंट का वी कैन नॉट असेस Hmm. इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, बट हाँ वी कैन असेस कि हाँ इस डिपार्टमेंट से इतना पैसा आ रहा है. इंडिविजुअली नहीं पता लग रहा कि इस Hmm. डिपार्टमेंट से कौन से असेट से क्या क्या चीज आ रही है, बट As वी an कैन, in the one department, we can assess it. हाँ एज अ डिपार्टमेंट एज अ होल वी कैन असेस दैट या दिस इज द रेवेन्यू, एक्स कॉस्ट, टैक्सेशन एंड नेट प्रॉफिट. व्हाट इज नेट Hmm. प्रॉफिट? इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, पैसा, मनी. So Right. of course, it's a part of department of an entity. So of course, goodwill is connected to that. For Hmm. example, an entity has 4 departments. So each department has a good proportion of goodwill, part of Hmm. goodwill. Correct? Hmm. अब एप्पल कितने प्रोडक्ट्स हैं? आईफोन, एयरपोर्ट्स, आईपैड, मैक, मैक ओएस, डेस्कटॉप, मॉनिटर, माउस, other accessories. Okay. Yes. iPhone is a one department, iPad is one department, others are others department. Okay. Hmm. एंड एप्पल इज इटसेल्फ ब्रांड नेम. ऐसा तो नहीं Yes. है कि सिर्फ एप्पल के मैक्स का ही ब्रांड इमेज है, आईफोन का ही ब्रांड इमेज है, नहीं ना. नहीं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एप्पल का अगर टोटल ब्रांड वैल्यू मैं कहता हूँ अगर 100 है, तो एप्पल आईफोन का कुछ ना कुछ होगा, 10 15, फिर 10 15 पार्ट मैक उसके आई मैक्स का होगा.
करेक्ट। कुछ कुछ एयरपोर्ट्स का होगा कि एयरपोर्ट्स की भी इतनी ब्रांड वैल्यू है, Hmm. वॉचेस की ब्रांड वैल्यू इतनी है। इसका मतलब क्या, प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल। अंडरस्टूड। Yes. ओके। तो फर्स्ट पार्ट, सीजीयू विद गुडविल, अ डिपार्टमेंट of cash generating unit with goodwill, proportion of goodwill of total brand image, ठीक है, of Hmm. with indefinite life। तो वो कब होगा, जब अगर इंडिकेशन दिख गए। इसका मतलब कि अगर कुछ दिख गया कि कुछ प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है, या तो कुछ इंडिकेटर दैट वी लर्न इंटरनल, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर Hmm. इंडिकेशन एग्जिस्ट है, तो वी शुड परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अगर नहीं है कोई इंडिकेटर, तो इम्पेयरमेंट एनुअली ही टेस्ट होगा, कि एनुअली देख लेंगे कि अच्छा लास्ट ईयर इतना था, इस साल का क्या सीन है, क्या स्टेटस है, क्या एक्चुअल में पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट इम्पेयर हुआ भी है, कि वैल्यू और उसकी अप्रिशिएट हुई है। अगर अप्रिशिएट है फिर तो इम्पेयरमेंट का कोई केस ही नहीं है, वी आर आउट ऑफ IAS 36। वी आर into IAS 36 only when there is impairment। Understood? Right. Yeah। Right. तो अगर एग्जिस्ट है तो परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्ट उसी टाइम पे। फॉर एग्जांपल 6 महीने, ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ, 6 महीने के बाद कुछ इंडिकेशन दिखा, सेम डे सेम टाइम पे वी हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। करेक्ट। अगर पूरे साल तक नहीं पता लगा, दैट वी डू नॉट हैव इंडिकेशन, देन ओनली टेस्ट एनुअली की क्या स्टेटस है। Okay. Yes. इंडिविजुअल असेट्स और सीजीयू अदर देन अबव। इंडिविजुअल असेट, उसमें क्या है कि अगर इंडिकेशन है तो सेम इम्पेयरमेंट करो, अगर इंडिकेशन नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है उसको एनुअल रिव्यू करने की। Okay. अंडरस्टूड। Hmm. तो ये थोड़ा सा थियरी को याद रखना, इंटायर पार्ट। ओके। और लॉजिक भी है ना, अगर ब्रांड इमेज 6 महीने विद इन 6 मंथ ही पता लग रहा है कि देर इज समथिंग रिडक्शन, तो इट्स लॉजिकली द रिकॉर्ड एट द टाइम ओनली, सेम एज इंडिविजुअल असेट। इंडिकेशन आ गया फिर तो रिकॉर्ड करना ही है। करेक्ट। बट एक्सेप्शन ये है कि इन सीजीयू विद गुडविल, अगर इंडिकेशन नहीं है बट स्टिल वी हैव टू टेस्ट इट एनुअली कि क्या स्टेटस है ईयर ऑन ईयर। Right. बट इन इंडिविजुअल असेट देयर इज नो सच कंडीशन वी हैव टू टेस्ट एनुअली और नॉट। अगर इंडिकेशन स्टेट फॉर्म, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट करो, इंडिकेशन नहीं है नो इम्पेयरमेंट। ओके। Okay. रिकॉग्निशन, रिवर्सल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। Hmm. व्हाट कुड बी द इंडिकेटर फॉर रिवर्सल। रिवर्सल क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं, अपोजिट ऑफ इन इम्पेयरमेंट इंडिकेटर। अब क्या होगा, अप्रिशिएट हो गई वैल्यू असेट की, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, ऐसे नए प्रोडक्ट्स और सेम टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च होने लगे, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, Hmm. इन्फ्लेशन कम हो गया। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है, फेवरेबल चेंजेस असेट, परफॉर्मेंस बढ़ गई असेट की। करेक्ट। हमने कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लिया, रेगुलरली मेंटेनेंस कर लिया, परफॉर्मेंस बढ़ गई, वी आर Yes. asset utilization इंक्रीज हो गया। So these are the indicator, internal and external indicators which shows that the indicator for reversal of impairment loss। इसका मतलब Hmm. कि रिवर्सल हो गया। नाउ बिफोर few years before we were thinking कि asset की वैल्यू डाउन होगी, बट आफ्टर few years it shows that asset appreciate हो रहा है। So basically what Hmm. does it mean, reversal of impairment loss। Okay, so how should we account reversal? Same logic। Firstly, there are two, what we learn two things, individual assets and, PGU. okay, so there are
two different ways of reversal of that. Not two different ways. Logic is same, but doing is different. Firstly, we learn in individual assets. Okay, Yes. reversal shall not exist. Okay, individual asset में what the standard is saying, if there is indicated in the individual asset that in future the impairment loss which we recorded in the books of account is going to reverse. कुछ Hmm. कोई भी because of x y z internal factor. Okay, Hmm. तो क्या करेंगे हम, ये सोचेंगे कि फ्रॉम डे हम ये अब समझ लेंगे कि फ्रॉम डे वन अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो क्या सीन रहता, और उतना ही पोर्शन हम Hmm. रिड्यूस करेंगे क्या. हाउ इज द कैलकुलेशन आई टोल्ड, आई एम एक्सप्लेनिंग एग्जांपल. असेट वैल्यू 10,000, life is 5 years. Okay, 2 years later, 2 years later, 2 years later कैरिंग अमाउंट क्या होगी. दिस इज डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, करेक्ट. ठीक है, Hmm. तो 2 साल तक 4,000 डेप्रिसिएशन हो गया होगा. Yes. करेक्ट. ओके, तो दिस माइनस 4,000, 2 years का डेप्रिसिएशन. ओके, कैरिंग अमाउंट 2 साल के बाद है 6,000. रिकवरेबल आर ए इज saying that the recoverable amount which is higher of, higher of what. Fair value less cost of sale or value in use. Okay, it's saying that your RA is 4,000. ओके, उस टाइम पे हमने Hmm. बुक कर लिया इम्पेयरमेंट लॉस 2,000 का. Hmm. करेक्ट. नाउ रिवर्सल, रिवर्सल का क्या चेंज आएगा. एवरीथिंग विल कीप इट सेम. 2 years later, 2 years later नहीं, यहाँ तक कैरिंग अमाउंट थी 2 years later was 6,000. ओके, Hmm. हमने RA रिकॉर्ड किया एट 4,000. ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया 4,000. बुक्स में क्या शो होगा, बुक्स में वैल्यू क्या शो होगी 4,000 ना, Yes. क्योंकि हमने एंट्री पास क्या करी होगी, डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट असेट Hmm. इन बुक्स ऑफ अकाउंट. करेक्ट. अब नाउ द वैल्यू इज सेइंग, रिवर्सल होके द वैल्यू, वैल्यू विल बी, वैल्यू विल बी 3,000. ओके, Hmm. करेक्ट, नॉट 3,000, 5,000. वैल्यू विल बी 5,000, इसका मतलब 1,000 बढ़ गया. Yes. ये क्यों हुआ, इम्पेयरमेंट रिवर्स. करेक्ट, Okay. इम्पेयरमेंट रिवर्स. तो हम कितना रिवर्स कर सकते हैं, पहले हमने एक्चुअल में इम्पेयरमेंट 2,000 का बुक किया, पर हम Hmm. रिवर्स कितना कर सकते हैं, ओनली 5,000 माइनस 4,000. और क्या सोच के किया, पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस पता लग गया क्या था. दूसरी बार मैं सोचा कि अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो क्या सीन रहता. अगर इम्पेयरमेंट पहले से ही नहीं होता, Hmm. करेक्ट, इम्पेयरमेंट पहले से नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट क्या रहती मेरी, 6,000 ही रहती. हाँ. करेक्ट. वैल्यू इन यूज क्या हो जाता, 7,000. क्वेश्चन इज सेइंग वैल्यू इज नाउ 7,000, इसका मतलब रिवर्सल हो गया. Hmm. तो 1,000 वैल्यू बढ़ा एक्चुअल में. करेक्ट. हमने Yes. बुक किया था पहले 2,000, हम रिवर्स सिर्फ 1,000 कर सकते हैं. Hmm. करेक्ट.
Yes. Individual asset. Now read the theory. Reversal in impairment loss. IL is impairment loss. Shall not exceed the carrying amount of asset that would have been calculated in absence of IL. What does it mean? The carrying amount is what? 6,000. The carrying amount of an asset that would have been calculated in absence of IL. Reversal should not exceed the difference of these two. Understood? अगर इम्पेयरमेंट नहीं Yes. होता, करेक्ट ना, इम्पेयरमेंट नहीं होता तो 6,000 वैल्यू थी, इम्पेयरमेंट हुआ तो 4,000 हो गया, Hmm. इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया 2,000 का. बट अगर इम्पेयरमेंट रिवर्स हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे, अगर इम्पेयरमेंट होता ही नहीं तो क्या सीन होता है, अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो वैल्यू ऑफ द कैरिंग अमाउंट तो 6,000 ही थी, Hmm. वैल्यू ऑफ कैरी है 7,000 है, भाई रिवर्सल हो गया, वी कैन ओनली 1,000. रिवर्स 1,000. Hmm. करेक्ट. तो Right. रिवर्सल इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट विल द एंट्री? डेबिट. व्हाट विल द एंट्री? टेल मी द एंट्री. डेबिट. एसेट की वैल्यू बढ़ गई, डेबिट व्हाट? Gain. Debit is gain. How? Income and gain is credited, na? Debit is expense and losses. Debits are assets. Accounting rule, golden rules. You forgot golden rules. Debits are losses and expenses. Debits are assets. Credits are liability. Credits are income and gain. Debits what comes in. Credit what goes out. Hello. Sorry, I again went outside the meeting. Hello. Hello, hello. Yeah, yeah. What I'm saying, what will be the entry? Debit, you said again, how gain? Debits are in expenses and losses. Na? Debits are assets. Credits are liability. Credits are income and gain. Three golden rules of accounting. So here the asset is increased by 1,000. Correct. Hmm. Debit asset, credit, gain. How much? 1,000. Understood. Yes. Correct. Okay. एक और चीज ध्यान रखना while calculating the impairment loss. Hmm. If the asset was valued at I-16, उसका impairment हो रहा है, करेक्ट, Hmm. तो उसका गेन ऑलरेडी हो चुका है लास्ट ईयर, तो उसका गेन कहाँ गया होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में. करेक्ट. हाँ. अब नेक्स्ट ईयर उसका हाँ. इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, तो इम्पेयरमेंट लॉस अगर फॉर एग्जांपल ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है 2,000 का, और करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर इम्पेयरमेंट लॉस इज 1,000, तो 1,000 वोंट गो इन पीएनएल. पहले तो रिवैल्यूएशन सरप्लस नील होगा, तो 2,000 में से 1,000 उसमें से रिड्यूस हो जाएगा हाँ. और क्रेडिट एसेट हो जाएगा. तो डेबिट वुड बी रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट वुड बी एसेट. क्योंकि क्रेडिट, Right. रिवैल्यूएशन सरप्लस आर इनकम, इनकम इज पहले मैंने क्रेडिट किया होगा, नाउ वी आर Right. डेबिटिंग इट. वाई? क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस उसमें से, मैं पीएल में चार्ज Hmm. क्यों करूं? पहले से वो बैलेंस हटाऊं ना जो सरप्लस मेरे पास पड़ा हुआ है. Hmm. उसके बाद मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा आया, फॉर एग्जांपल 2,000 बैलेंस पड़ा हुआ है और इम्पेयरमेंट लॉस 3,000 हुआ, तो 2,000 Hmm. पहले उसमें से नेट करूंगा एंड ओनली 1,000 विल गो इन पीएनएल. Right. अंडरस्टूड. Got it. ओके. Yes. Okay, so we are done with reversal as well for individual. For cash generating unit, how will do? Uh, we have steps for impairment. Impairment of CGU. Hmm. Okay, what we learn now? How to calculate impairment loss for individual asset.
and if reversal Ah, occurs, how do we reverse it? Okay. right. Now we are learning how to record impairment loss for CGU, which is a group of assets, entire department, goodwill, of whom Okay. we cannot assess individual cash flow. Those are CGUs, Hmm. cash generating units. Deal with any specifically impairment first, then the impairment CGU. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो फॉर एग्जाम्पल एंटायर सीजीयू, अब यहाँ पे टोटल टोटल में बात होगी. सीजीयू कैरिंग अमाउंट इज 150. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू इज सेइंग 120. So what is the impairment? Okay. Now the question is saying, the standard is saying, ये जो 30 का impairment है, और Hmm. क्वेश्चन में बाइफर्केशन दिया हुआ है कि out of this 150 there are three assets named goodwill, um, machinery and furniture. ठीक है. Hmm. ऑल हैव कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 50 15 बुक्स ऑफ अकाउंट. इसका मतलब टोटल 150 हो गया, तभी 150 आया. सीजी Yes. करेक्ट. ये एक Yes. सीजीयू में इतने असेट्स इंक्लूसिव थे. Okay. तो क्वेश्चन इज सेइंग, ये जो इम्पेयरमेंट 30 का आया हुआ है, Hmm. रिकॉर्ड एंटायरली टू गुडविल फर्स्ट. गुडविल की वैल्यू 50 है, 30 पहले इसमें चली जाएगी. फर्स्ट हमेशा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू बुक इन गुडविल. इसका मतलब गुडविल कितना हो गया? Why? इट्स अ रूल, स्टैंडर्ड इज सेइंग. क्योंकि लॉजिक क्या है, सबसे पहली हिट असेट पे नहीं जाएगी. कोई भी किसी को हिट लगेगा, सेटबैक लगा, सबसे पहले कंपनी का ब्रांड इमेज डाउन हो. ये लॉजिक है. Right. Right. कोई भी चीज खराब निकली, फॉर एग्जांपल टुमारो आईफोन 19 लॉन्च, 18 लॉन्च हो, Hmm. तो बहुत वियर्ड डिफेक्टिव पीसेस निकल रहे हैं, तब तो क्या होगा? Hmm. सबसे पहले जिस मशीनरी में वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी वैल्यू डाउन होगी कि एप्पल ही डाउन होगा? नहीं, ब्रांड वैल्यू डाउन होगी पहले. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Got it. ठीक है. इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग कैरिंग वैल्यू सीवी एंड रिकवरेबल अमाउंट. अंडरस्टूड. देख, Yeah. 150 एंड 30 Hmm. हो गया. 120. Hmm. If I say today that the RA is only 20, okay, Hmm. इसका मतलब 130 का इम्पेयरमेंट आ गया. Yes. तो सबसे पहले 130 में से 50 नेट ऑफ गुडविल होगा, क्योंकि उसकी उतनी ही कैरिंग वैल्यू थी, इसलिए हमने पूरा का पूरा 130 में से 50 उसमें चार्ज कर दिया. Hmm. ठीक है. फिर स्टैंडर्ड इज सेइंग कि इस दोनों का प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा. फॉर एग्जांपल 130 इज द टोटल इनटू हाउ मच वाज लेफ्ट. 130 में से 50 वाज ऑलरेडी चार्ज टू गुडविल. 80. हाउ मच इज द बैलेंस इम्पेयरमेंट Eight- लेफ्ट? 80. 80. करेक्ट, 80. Hmm. तो 50 इंटू 80 डिवाइड बाई 100. हाउ 100? इसके प्रोपोर्शनल बेस पे, इसकी प्रोपोर्शनेट कैरिंग वैल्यू के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. The remaining one. रिमेनिंग वन 50 पे तो ऑलरेडी चार्ज Okay. कर दिया हुआ है. ठीक हाँ. है. सेम 40 40 होगा, क्योंकि इसमें भी 50 है इसमें. अंडरस्टूड. Yes. परफेक्ट. तो 50 आउट ऑफ 130, 50 विल चार्ज टू गुडविल फर्स्ट, और बाकी के दो के कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शनल बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा. Hmm. That's how impairment of goodwill, CGU is accounted. Let's solve this question for your clarity, and then we'll do reversal of CGU.
This is impairment loss calculation. Kind of confusing. Which one? Not Do, confusing, but like everything is just getting mixed up. what is mixed up? दो चीज है पूरे स्टैंडर्ड में, इंडिविजुअल असेट सीजीयू, ठीक है, दोनों को अकाउंट करने का Hmm. डिफरेंट डिफरेंट है तरीका, ठीक है। Hmm. पहले तो हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, अब उसके हाँ. बाद हो गया कि रिवर्सल हो गया। तो जैसे ही दोनों का इम्पेयरमेंट लॉस का तरीका अलग अलग है, रिवर्सल करने का भी तरीका अलग अलग है, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग। Hmm. तो Hmm. फर्स्ट वी लर्न इंडिविजुअल का इम्पेयरमेंट लॉस, हाउ टू account for impairment loss. Second, we Right. learn how to record reversal of impairment of individual asset. Now we learn impairment of CGU, कैसे impairment करना, and the next thing we'll do is reversal of CGU. Understood? Got it. Yes. Yeah. Now try to solve this question. And one thing to note in this question is that the question itself is saying it is considered, last line, it is considered at the carrying amount of other net asset, which is this, is a reasonable presentation of their net realizable value. Understood? इसका मतलब ये अपने रिकवरेबल अमाउंट पे ही है, तो इस पे इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगा। Okay. इम्पेयरमेंट हम क्यों कर रहे हैं? अगर वो रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो ना, ये ऑलरेडी रियलाइजेबल वैल्यू उस पर बुक्ड है, तो उस पे इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं Hmm. करेंगे। Okay. सॉल्व इट सेम वे विच आई डिड हियर, विल गेट द राइट आंसर। Yes. इट्स 2-1, यू हैव टाइम टिल 2-5।
Done. Yes. Just a second. Mm-hmm. I don't know if my answer is right or not. So can you please really explain? I'm stuck in between. Firstly, do you understood the question? Not exactly. This is the CGU. Entire SEP company runs a unit that suffered massive drop in income due to failure in technology. Okay, carrying Hmm. amount of all these units are as given: goodwill, technology, Hmm. brand, land, building, other assets. Other assets are already recorded at net realizable value, so there is no need to impair those. The recoverable amount of total unit is 85. Question also says the technology part is worthless, which following its complete failure. In a unit, technology value is 5. Hmm. So he's saying it's a complete failure, so it's a 0. Complete failure. Language से पता लग रहा है ना? हाँ. And the other assets include receivables and inventory. Then we have seen that those are already recorded at net realizable value. तो इस पे भी Hmm. impairment calculate करने की जरूरत नहीं. Okay. So firstly, let's take the total. Goodwill, technology, brand, It's land, 155. building, other assets. 20, 5, 10, 50, 30, 40. Okay. 155 is the carrying amount of entire CGS. Okay. Hello. Hmm. Yes, yes. It goes RA is question is saying 85. Impairment loss कितना हुआ? IL 70. हाँ. Okay. Out of 70, now 70. What will do when state first as per standard guidance goodwill impact होगा 20, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. Out of हाँ. 70. Question is saying technology is also worthless. इसका मतलब वो 0 हो जाएगा. Hmm. Correct. This is already recorded at net realizable value. तो ये इस पर तो 0 ही impairment loss other operating other assets other net assets. Hmm. ठीक है. तो बैलेंस कितना बचा हुआ है 90. इम्पेयरमेंट का? 90. 10 plus 50 plus 30. इम्पेयरमेंट का ना, दिस इज कैरिंग No, अमाउंट no, no. 45. Yeah. करेक्ट. तो 45 नाउ
45 will be proportionate based on these three carrying amounts. Understood? That's what I've Hmm. explained you. 10 into 45 is the total balance impairment loss left, into 10 is the proportion of building part, divide by 90, proportionate of all three. Okay, Hmm. is equals to this, which I'm fixing. Okay, into this, divide by 90. Okay, Hmm. correct. Yes. So how much is the total impairment we calculated? 25, 25, 30, 25, 30, 30 plus 25, 55, 55 plus 15, 70. 70 is the impairment loss. Done. Hmm. This was the entire logic. Okay. Understood or not? Yes. Good. Where you were confused in this question? Which part? I was not able to find out this 45 remaining amount. Out of 70, 20 charged straightforward to goodwill. Hmm. 25 is already saying, question is saying is technology is completely worthless. तो उस पे प्रोपोर्शनेट क्यों करेंगे अपन? क्वेश्चन ही कह रहा है Right. कि वर्थलेस जीरो है तो उस पे प्रोपोर्शनेट करना ही क्यों है? Now I got it. करेक्ट. Hmm. और नेट असेट तो ऑलरेडी उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्डेड है, तो हम उसको इंपेयर ही क्यों करेंगे? Hmm. Yeah. So that's what they are also doing. What they did, impairment expense, सबसे पहले तो उन्होंने वही कर दिया कि टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली वर्थलेस, देयरफॉर मस्ट बी written down to nil. Hmm. Impairment expense 5 million, credit in technology 5 million. PNL. Following the written down of technology, the impairment loss allocate against remaining CGU is 65. 70 total था, 5 impair technology पे allocate कर दिया, तो we left with 65. Out of 65, 20 straightforward goes to goodwill. Hmm. We left with 45. Now 45 Okay. divided between these three, 10, 50 and 30. Brand, land and building. Other net assets are already recorded at their recoverable amount. That's what. 50 was the carrying amount, 65 impairment loss, and this is the impaired value, 85. This is the way. Seven. The real answer is 70, right? Yeah, 70 is Yeah. the impairment loss. But what the question is saying, show the impact of impairment on 1st January. Answer is Hmm. 70, yes. But in books of account balance sheet में goodwill zero हो जाएगा. Brand value will show 5 out of 10. Land की Yes. value will show in balance sheet 25. Building will show at 15. Correct? Yes. This is the impact in financial position. But a total 60, 70 का loss, impairment loss will go where? PNL. Correct? Uh, This is the way. Understood. I think you should be able to do this one. I want a bit of confidence at your end. Do this one, the quick one. Yes.
2 minutes. Take your time. It's 14:16. You have time of 4 minutes. 14:20. Yes. Done. 2 minutes. Yeah, done. What's the answer? My answer is 50.
we are supposed to find out the carrying amount of intangible after the reduction of impairment loss. So what they did that this recovered amount, which is 100, minus carrying amount, which is the total of 140, which gives 40, and the inventory and trade receivable were given at the recoverable amount. So the goodwill is the whole 25 is deducted. So the remaining is 50, 15. Mm-hmm. So by multiplying it, carrying amount of intangible is 60, impairment is 10. So impaired value is 55, 52 million. This is the solution. You are correct. Yes. Hmm. Exact. Yeah, exactly. Right. The last topic which we are left is with the reversal. Let's complete it, and we are done with that 36 as well. Okay. Then we are only left with the borrowing Borrowing cost. cost topic. Yeah, borrowing cost. Okay. Yeah. Reversal of cash generating unit. Without goodwill, if the cash generating unit does not have goodwill, we do the same as per individual assets. That's what we did. Hmm. अगर इम्पेयर नहीं होता तो क्या कैरिंग अमाउंट होती और रिवर्सल के टाइम पे क्या कैरिंग अमाउंट हुई which is 7,000. Difference of two is will be reversed. Okay. With goodwill, Hmm. जिसमें goodwill है that the current ones which we are trying to do, which is split, yeah, this one. We have goodwill, and what you did, you charge 25 on goodwill, and later on you came to know that there is reversal in the impairment, and our value has got increased. Correct. So only Hmm. this one is the Hmm. exception is that you cannot reverse the already charged impairment loss on goodwill into books of account. The rest Why? one can be reversed. Logic is simple, na? That एक बार Only goodwill cannot be. yeah, goodwill cannot be reversed. Other same concept. Understood. Good. The reason Then behind is why it that is not same for yeah, the reason is that goodwill, the logic says once we damage the goodwill, we are saying that the value of goodwill has decreased because of so and so indicators and reasons. Later on, we cannot say Mm-hmm. that yeah, again it got recovered and we can add on in our books of account. Understood. Okay. So Okay. only the goodwill portion cannot be reversed. The others are same. We can reverse it, but only up to the point when goodwill the impairment is not there. What would happen if the impairment is not there compared with the carrying amount uh, Hmm. with the reversal part? Difference of those can be added in our books of account. Basically, the reversal. Okay. So if you take this So, question, out of 50, only 25 cannot be reversed. hmm. So 10 and 15 can be reversed. Right. Understood? To take this Right. question, this one, the technology part. In this, 20 cannot be reversed. 5, 5 so already said that it's 0. So
किसी किसी में खुद का थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन इज इटसेल्फ सेइंग दैट इट हैज नो ब्रांड वैल्यू एंड टुमारो समथिंग कम्स अप एंड से नो 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 दिस हैज ब्रांड वैल्यू, दिस इज नॉट राइट, करेक्ट। इसमें क्वेश्चन ही कह रहा था कि the technology is completely worthless and following its complete failure. And tomorrow you will Hmm. say, if we are reversing that impairment loss, what are we doing actually? We are saying, no, no, the technology is now worth. That's what we are doing, right? Right? The reversal, if we are doing on Hmm. technology, the rationale would be the same, right? Rationale would be, no, no, the technology is worth now. That's what the rationale, right? Right. But this is not allowed. This is it seems misrepresentation. Only other good for same goodwill cannot be reversed. Question itself saying technology is not worthless, so technology will the charged amount on technology is also not going to reverse. Land and building will be reversed. Okay. Got it. Something. See, the more questions you will do, you will get a more variety of things. Hmm. Okay, so Yes. that's how you will able to understand what's our crux and the types of questions can come up in the examination. Hmm. Hmm. Is- Understood. Do you understand the difference between the question which I made you solve and you try to solve? This question which you solved didn't had much complication. Straightforward 40 का carrying amount है. You have been given the recoverable amount. You deducted that amount, correct? And you charged Correct. out of that state to goodwill and the balance on intangibles and property, plant and equipment, correct? But the one which I made you solve has two complications. Firstly, the technology part Hmm. is saying it's worthless and complete failure. There is no need to do proportion pro rata basis on technology part. The question itself in technology zero means zero, correct? And the second one Hmm. was this inventory and receivable. Those were already recorded at cost on their recoverable amount. Hmm. So there is no need to Hmm. impair, na? Correct? Hmm. Right. The reason why we are doing impairment is that we are recording the assets on recoverable amount, correct? And the difference Right. between the carrying amount which we had already recorded asset on and what is the recoverable amount is the impairment loss. So the motto is to record assets on recoverable amount. Hmm. And the difference we are charging either on P&L or a revaluation surplus if the asset was previously revalued on and the revaluation surplus is recorded in OCI. Got the concept? If the revaluation surplus is already recorded in the books of account and next year we are charging impairment loss, then first motto is to net it off the revaluation surplus, reduce the revaluation surplus, and the balance will be charged to P&L. Hmm. Correct? Hmm. Okay. Got it. So yeah, I think we are done with IS 36 as well. And I can see there are a lot of questions in textbook as well, and a big good 15 marker questions of section B. The one which I made Hmm. you solve would only come in section A, 2 marks each. But I Hmm. want you to solve the 15 marks bigger questions. And I know कि कुछ कुछ डाउट होंगे और कुछ कुछ चीज नहीं समझ आएगी, but I'm ready to help you out. Yeah, I'll surely do that. Yeah, because क्या होगा कि अगर मैं ही सब कुछ सॉल्व करवाने लग जाऊंगा ना तो आप your mind won't work. नहीं नहीं सही बात है. You have to brainstorm your mind first. Hmm. और फिर चीज नहीं समझ आ रही है फिर तो वी आर देयर ना. Yes. तो reversal is done, EG is done. These are the test understanding. That's the summary. Yeah. So yeah, we are done with the IS 36 as well. We are just left with the final topic of today, IS 23, which is the borrowing cost. Let's take 15 minutes sharp break
and we'll meet at 14:45 sharp. Okay, done. Okay? Done. Yes.
Hello. I hope everyone are back. Hello. Hello. Yes. Yeah. What do you do in these short breaks? Just wondering. Usually just go help my mom or usually don't watch phones because वो फिर दिमाग खराब कर देता है. Mm-hmm. जो भी like just sit. I don't revise. Revision is afterwards. Okay. Let's start the borrowing cost as 23. Yes. What do you understand by the term borrowing cost? Firstly, let The me in give you a brief idea what we are going to learn and then try to explain that. You remember when we did as 16 and when I was yes. explaining you the cost of assets, the different type of cost which can be added into the cost of asset. Mm-hmm. In those, I discussed Yeah, that was borrowing bank cost. loan. Yeah. Yeah, bank loan. Hmm. This is the loan interest amount which I took either to construct particular asset or to purchase the Hmm. asset. Okay, Mm-hmm. Right. so that interest component also got added in our cost of asset value. How much is added, at what rate, till when it stops, all will learn in IS 23. Okay. But in IS 16, I just when I just made you explain the bank loan part that it's also got added, but I didn't explain you the detailed technicalities of that. But that Right. will learn in this IS 20. Okay. Right. Okay. IS 23 borrowing cost regulates the extent to which entities are allowed to capitalize borrowing costs incurred on money borrowed to finance the acquisition of certain assets. Borrowing cost must be capitalized as a part of cost of an asset if that asset is a special qualifying asset. One qualifying asset is those assets which take sufficient period of time to build or construct. Correct. Okay. Standard doesn't specify how Hmm. much is the substantial period of time. There is how what is the time limit? No. Standard is only saying an asset takes substantial period of time. So the understanding the term substantial can be a bit subjective during the following question, but it won't come more difficult way. It won't test in that way. Right. Qualifying asset, one which necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Okay, Okay. take substantial period of time to what? To get ready and for its intended use, for which we are Right. trying to intend. Hmm. Commencement. Commencement of capitalization. When we start capitalizing the interest part, expenditure for asset is being incurred. For example, I've started constructing a property. In that, I've started incurring expense. For example, any expense. For example, um, you know, I started documentation part, paid certain expenses of admin stuff, documentation part, to give me permission, certain licenses cost, anything. I've Hmm. started incurring the cost of that, constructing a particular property or asset. That is going to take substantial period of time for me to create its intended use. Right. Okay.
Borrowing costs are being incurred. I've taken loan on that property to construct for construction. Activity that are necessarily to prepare the asset for its intended use or sale are in progress. And activities, incurring cost, preparation are, and I mean all costs which are necessary to make the asset for its intended use are in progress. Basically, the construction should be in progress. That's what the Hmm. third point is saying. Hmm. Activities, construction that are necessary, construction necessary for property for intended use to be ready for its intended use. Right. The rate of interest to be taken. कौन सा rate of interest to be taken will not. Where the fund had borrowed specifically to acquire a qualifying asset. जब कोई fund स्पेशली उसी asset को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया जाता है, borrowing costs are capitalized less any investment income on temporary investment of borrowing during the capitalization period. Let's understand this by an example, which is illustration 6. Just to understanding 6. Wilson received an $18 million loan at Hmm. 5% on 1st of Jan 2008 to finance construction of a new factory. Understood? Hmm. Hmm. As the fund was not required immediately, जो $80 million का जो fund मिला, that was not required immediately. Right. ठीक है, तो क्या किया विल्सन ने सोचा, मैं 5% पे लोन दे इंटरेस्ट पे करूंगा, इससे अच्छा from 1st of Jan, the day I got the loan, till 31st May 2008, which means five Hmm. months, he invested somewhere $6 million at a 2% bond, Okay. 2% interest rate. Okay, he Hmm. interested in bond, and the rate of interest was 2%. Right. Construction of factory began on March 2008 and was completed on 31st December 2008. Hmm. In short, एक साल में फैक्ट्री बन गई. Hmm. Correct. What are the conditions to satisfy? Factory is going to take substantial period of time. Yes. Expenses started incurring from 1st of March. Loan already मिल गया 1st of Jan को, that is fine. But actual expenses started from 1st of March. तो हम अप्रैल से कैपिटलाइज Hmm. नहीं करेंगे, हम मार्च से कैपिटलाइज करेंगे. मार्च से Right. till the asset is ready for its intended use, which is 31st December 2008. Okay. So Right. we'll capitalize the interest component in the cost of asset from March, 1st of March to 31st December. Hmm. Okay, how Hmm. much we'll calculate this part? Got it. The rate of interest to be, and the question itself asking what is the rate of interest to be calculated, sorry, amount of interest to be capitalized in request of factory, in respect of factory at 31st December 2008. Hmm. 18,000 का loan. Okay, 5%. How much is the interest part? Into 5%. Into how much period? March, April, May, June, Right. July, August, September, October, November, and December. 10 months. Into 10 divided by 12. 750. Okay, 750. Yeah. But out what? Hmm. But out of this $18 million, we invested 16 na at a 2% interest. So वो तो income हो गई. That is not our expense. Right. Correct. So the 6 million है, we invested. So then 750 is our capitalized amount. Not Hmm. capitalized amount. This is the interest which we calculated from March to December. But out of 18, the 8 पूरा का 18 पूरा 18 million इन्वेस्ट नहीं हुआ था. सॉरी, पूरा 18 million फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं हुआ था. उसमें से सिर्फ 12 million यूज हुआ था मार्च मई तक, एंड उसके बाद 18 million यूज हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. $6 million तो मई तक इन्वेस्ट कर दिया था, इसका मतलब मार्च अप्रैल मई 3 महीने तक हमने सिर्फ $12 million यूज किया. Right. अंडरस्टूड. Hmm. Got it. ओके. Until 31st में लिखा है. हाँ. ठीक है, तो 6,000 का इंटरेस्ट जो हमने कमा, वी अर्न एट 2% इंटू 2%, राइट, इंटू Hmm. हाउ मच मंथ्स? 3 months.
3 divided by 12. So this is our income 30. Understood. Okay. Hmm. So the net that we are going to capitalize is 720. Okay. Got it. I'll show you the calculations as well. This is the calculation. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में किया हुआ है, a bit longer way. इन्होंने क्या किया, पहले पूरे साल का निकाल लिया, 18 million into 5%. ठीक है, Hmm. इंटरेस्ट पेबल कितना है, तो 900 इज पेबल. बट प्री कंस्ट्रक्शन कितना था, दिस इज फॉर 12 मंथ, 900 इज फॉर 12 मंथ. बट हमें तो 10 मंथ का चाहिए, करेक्ट ना. Right. तो 12 मंथ का टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना था, दे कैलकुलेटेड. उसमें से प्री प्री वाज 150, करेक्ट. Hmm. प्री वाज 150, इसका मतलब 150 वोंट बी कैपिटलाइज. इसका मतलब 750 आ गया कैपिटलाइज अमाउंट 10 मंथ्स. वन में इसका मतलब 12 मंथ्स और 1 मंथ, 2 मंथ, करेक्ट. आर यू गेटिंग? Yes, yes, yes. And the capitalized interest cost is 750, but out of 750 we earn 3 months of interest as well. So what they did, they calculated 6 months into 2 million into 5 by 12. Why 5 by 12? Jan, Feb, March, April, May. But Hmm. only, but our construction started from March. So for 2 months it's a pre-interest earned, so that won't be part of our capitalized adjustment, same as the interest January, payable part. February. Jan and February Hmm. is our income, of course, is our income, but it won't be part of our capitalized capitalized period adjustment. Correct. Right. Our Hmm. capitalization period is from March to December. Understood? Yes, yes. Understood. So what they did, 5 months minus 2 months pre construction credited, net is 30, and 20 is the net capitalized expenditure. That's what we also got. Okay. Yes, understood. तो अगर क्वेश्चन, लेट्स चेंज द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा होता हाउ मच is the pre net adjustment would be made in PNS, what would be your, what would have been your answer? Go ahead. अगर प्री कंस्ट्रक्शन का एडजस्टमेंट चाहिए तो क्या आंसर होता आपका? It should be 20. Hello. हाँ, बट इंटरेस्ट पेबल भी तो आएगा ना, 20 ठीक है, पे इंटरेस्ट कॉस्ट. 750 minus 20, right? नॉट 750 ना. See what the question I have asked. Pre-construction net adjustment. Net means expense minus income will be charged, will be going to P&L. Understood? So pre-construction interest component was 150. Hmm. This is the pre-component part ना, 150. Right, right, right. Correct? उसमें Yes. से interest earn pre-construction interest earned is 20. So Hmm. 150 minus 20. Okay. 130 is the net.
expense. So the question is just about the 3 months, that is March, April, and May. No 3 months ना, Jan and Feb pre construction. Construction March से शुरू हो गया. I asked question for pre construction net adjustment. So I'm talking तो about Jan फिर and Feb only. हाँ, तो फिर 2 मंथ्स जनवरी का माइनस क्यों किया, जनवरी फरवरी का? In which questions I asked or the illustration one? The question that you asked, उसमें you क्या किया हमने? deducted 150 minus 20. 150 and 20, 130. Why 20? 20 is the income earned na, 2% bond. We invested from Jan to May, and हाँ. from March to May is our construction capitalization construction period. Hmm. So Jan and Feb is pre-construction ना, Okay, right, yeah. correct? Understood. तो हाँ. उसी के पीरियड का एक कैलकुलेटेड इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसी के पीरियड का एक कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इनकम विच आई इन्वेस्टेड. तो नेट तो पीएनएल में 130 जाएगा ना, Hmm. करेक्ट? Understood. Okay. Yes. I think, yeah, just one small concept left. Removing this highlight should also fill it. Okay. Now now we take multiple loans at different rates. So what should be the actual Hmm. rate of interest? So if an entity had a $10 million at 6% had taken loan, $2 million, 8% loan in 8%. So the weighted average cost of borrowing would be 10 million into 6%, 2 million into 8% divided by total. Understood? So this is the 6.33 is the weighted average cost of interest, cost of loan, which is interest. Hmm. So you know what we did? We did six total interest component, 10,000 into 6%, Yes. 2,000 into 8%. This plus this divided by 12,000. Hmm. How come? This plus this divided by 12. Yeah, 6.33. Understood? This is the weightage average. Average cost of interest rate. अगर मल्टीपल Hmm. लोन्स है तो हम ऐसे एवरेज आउट कर देंगे. So the average interest rate is 6.33 in current scenario. Now the question comes up: cessation of capitalization. When do we cease? When do we stop capitalizing the interest part? When substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset to intended use are complete. In our case, it was December in this tested understanding 6.
Correct? Right. So Hmm. till this date, we capitalize. Okay. Second, Okay. construction is suspended. For example, um, in June, the government says that the construction you have to be suspended, or either because of unfortunate situation, unforeseeable situation, the construction has to be suspended because of any policies or uh, any natural calamities as well, earthquake aa gaya, Hmm. anything. Because of that, you have to stop the construction. So till that date, only till that date we'll capitalize. The rest part will go in P&L. Understood? Okay. For example, in June we stopped, we has to suspend the construction of factory, Right. and we started in March. So March, April, Huh. May, and June. Only 4 months of interest will be capitalized. Rest all will go in P&L. Got it? Solve this part. Solve this last question. Make sure you read it twice before start solving. Make sure you understand. Yes. In this question, both the components are there: purchase and construction. Requirement is to calculate the total cost of property, plant, and equipment, not the capitalized amount of interest. Total cost. Hmm. And total cost will include interest capitalization as well. Done. What is your answer? My answer is 43,000. Very nice. So, as per the total amount, we will include the 25 million of purchase, 9 million of construction, and 6 million of Furniture fittings. pitching. Yeah. Yeah. And on 30th September 2025, the construction completed. Mm-hmm. And the loan was repaid on 30th June 2026. So the 9 months between these both dates will be included in the interest capitalization. Perfect. So 40 million into 10% Into nine, right? into nine Perfect. Perfect. months. Perfect.
even That though costs 43,000. even though the loan brought in the date of brought into use was 1st Jan 2026, which is 3 months after the date of completion. Which Hmm. we will still book Hmm. our capitalization only till the date it's ready to use. We don't care when you start using it. We only care, the standard says, only care when the asset is ready to use. Don't care when the entity is intent, starting to use. Understood? Here it was We brought, only take the date when it's completed. correct. Here it's told that it was brought in use on 1st of Jan on 2026, but it was Hmm. completed on 30th September. So we'll only capitalize till 30th September. We Hmm. won't go, we won't say no, no asset was, you know, brought into use on 1st of Jan. So the 3 month interest costs will also be recorded in cost of asset. No, it will straight away go to P&L. Yes, because once it's completed, it's ready to use, no matter what, Correct, on correct, which date correct. you use. Perfect, perfect. Right. Understood. Hmm. Perfect. Then yeah, we are done with today's agenda. I think you guys have enjoyed. Let's meet tomorrow with new topic. Most probably I'll start IFRS 16 leases. Uh, so yeah, that's Okay. it. Thank you so much for joining. Bye and good night. Bye.